What is up? What is up, gang? What is up? What is up? What is up, gang, 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 gang? Hello, 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 boys, hello, boys. हेयर कट किया है? यस सर। हेयर कट डन। कैसा दिख रहा है? हेयर कट कैसा दिख रहा है? एकदम झाटू? Hell nah, bro. The fuck you say? The fuck? The fuck? अबे अच्छा तो दिख रहा है भाई इतना। अच्छा नहीं दिख रहा? ब्रो, क्या मसला है भाई? क्या हो गया उतर पुतर? जरा चेक करूँ। 5K लाइक्स हो जाएंगे। अच्छे। चैट क्या हो रहा है भाई आज का? अबे लॉल्स टीएजी में चला गया भाई का। लॉल्स का तो फटा है वॉचिंग जो। जी गॉड भी जाएगा क्या अब? जी लॉल्स तो गया भाई, जी गॉड का क्या सीन है भाई? जी गॉड भी जाएगा क्या? अरे मेरा मत बोलो यार। मैं जाऊं, मैं खुश हूँ टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं खुश हूँ भाई। चैट आप बार बार मतलब ऐसा मेरे को मत बोलते रहो। देखो, जाते वो लोग हैं, चेंज वो लोग करते हैं जो खुश नहीं होते, है ना? जैसे जो भी मेरे प्रीवियस ऑर्ग्स थी, मैंने इसलिए वो छोड़ा क्योंकि वहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही थी। मैं खुश नहीं था, या फिर कोई चीज़ का डिले था, या कुछ चीज़। तो इंसान छोड़ता है, तो मैंने छोड़ा। अब मैं जो यहाँ पे आया हूँ भाई, पता है, टू बी ऑनेस्ट चैट, मैं मजाक भी नहीं करता हूँ। यहाँ पे हर चीज़ सही है यार। सही मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पीयर प्रेशर में बता रहा हूँ कि अब आरएनटेक्स में हूँ तो अच्छी अच्छी बातें करनी हो। नहीं, बट सब सब चीज़ सही है। पता है, यहाँ पे जो मतलब रोहित भाई जितना एफर्ट्स डालते हैं मेरे पीछे, ठीक है, कि मेरे को मतलब प्रायोरिटाइज करके रखते हैं कि हाँ मेरे को नियो के लिए काम लाना है, नियो के लिए डील्स लानी है, नियो के लिए ये करना है, वो सब करते हैं रोहित भाई, ठीक है। और वो लेजिट टाइम टू टाइम मेरे को पूछते भी रहते हैं कि तुम खुश हो ना यहाँ पे। वो मेरे को भी नहीं, किसी और को भी जाके पूछते कि नियो को अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। मतलब वो इतना सोचते हैं भाई, इतना वो केयर करते हैं, ठीक है। और बाकी रही जो क्रिएटर्स, सारे अच्छे क्रिएटर, सारे क्वालिटी क्रिएटर्स, सब अच्छे से बात करते, सब अच्छे से रिस्पेक्ट करके बात करते। एक एक दूसरे के टूवर्ड्स वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है सबका, ठीक है। ये चीज मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैंने नहीं देख रखी है इसके पहले। हम्म, कल भी इवन शूट पे गया था। मेरे को लगा था थोड़ा अजीब लगेगा मेरे को, समझ रहे हो, क्योंकि मेरा पहला शूट है। सब चिल मैच, मैं भी बस एक डेढ़ घंटा में भी खुल गया। फिर तुम्हें पता है, तुम्हारा भाई खुल जाता तो यार
यहाँ पे बढ़िया है ब्रो, तो मेरे को तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं। और अपन तो यहीं पे रहेंगे जब तक रोहित भाई अपने को रखना चाहे, मालिक। अबे डोडो मार डोडो थैंक यू डोडो, तू तू तो सेम कार्निवल में बोला था। कार्निवल तो बंद हो गई ना भाई, मैंने छोड़ा थोड़ी था। कोई आर्टिक्स में ही रहना। लव फ्रॉम टीएजी, हाँ यार, बढ़िया है यहाँ पे सब कुछ। जिगौड़ का क्या सीन, आई डोंट नो भाई, जिगौड़ का क्या सीन। अब तो बहुत लोग बहुत टाइम से पूछते भाई, ये दक्ष यादव भाई तमस स्पैम करो भाई, क्या है ये तुम आके इसका 1v1 उसका 1v1 देखो भाई, रुको तो भाई। अभी 5 मिनट नहीं हुआ मेरा स्ट्रीम ऑन करे हुए मेरे को। जी गॉड का आई डोंट नो यार, ऑनेस्टली क्या सीन है। मैं तो देखो भाई, वही है, उसको तो मिलता रहता हूँ मैं, चैट मिल के बात करता हूँ, उसको समझाता हूँ चीजें। अब पता नहीं ऐसा कौन सा चीज वो फिगर आउट करना चाह रहा है। बट आपको नहीं लगता कि मतलब जी गॉड बहुत ऑफ ऑफ सा लग रहा है भाई? मतलब जो जी गॉड को अपन पहचानते थे वैसा तो नहीं लग रहा है। अब आई डोंट नो, पता नहीं कौन सा टेनेट मूवी जैसा कौन सा दिमाग लगा रहे जी गॉड, पूरा क्रैक कर रहे लग रहा है, एल्गोरिदम क्रैक कर रहे जी गॉड। गॉड को बोला भी भाई, तू कंसिस्टेंट हो जा तू भाई, स्ट्रीम में मार, वीडियोस वीडियोस डाल। ना साला रेगुलर स्ट्रीम करता है ना साला, कुछ और सीन है। पूरा ऑफ, पूरा गायब है भाई, पूरा गायब है। बहुत टाइम से गायब है जीगा। डार्क रियलिटी वेरी सीरियस एंड फुल स्टोरी टीम एपेक्स गेमिंग एसएटीएल सीट गॉड लाइक लॉ। भाई क्या डॉट्स को क्या हिट विट थोड़ी मिल रहा है, सही है ना सब? जीगॉड वही स्टिक कर रहा है। वो तो देखो एट द एंड ऑफ द डे उसका डिसीजन है कहाँ स्टिक कर रहा है, क्या है। अगर स्टिक कर भी रहा है तो तुम लोग ने स्टिक कर रहा है उसको इतना नेगेटिव वे में क्यों तुम ये कर देते हो बे, चैट? मतलब तुम्हें नहीं चाहिए वो स्टिक करे? स्टिक कर रहा है तो अच्छी बात है। कॉल जी गॉड, अरे मैं उसको कॉल करा था। रुको अभी उसको कॉल, कल कॉल 2 कॉल करा था, उठाया नहीं उसने। पता नहीं लॉक इन होके बैठा हुआ है। रुको। उठा नहीं रहा। 113 के लाइक्स कल के स्ट्रीम पे लॉल्स के, बढ़िया चीज है यार। उठा नहीं रहा, पता नहीं। हाँ, बिजनेस करेगा बोल रहा है, पेट्रोल पंप का खोलेगा। वी डोंट नो आप लोग के बीच में क्या चल रहा है, बट डीप डाउन आज भी पुरानी टीएसएम एंटिटी के अबे अबे अबे, अरे मेरे भाई, मेंटल हेल्थ सही है ना, उसको डिप्रेशन में ना चला। आई डोंट नो यार। जॉनी से बात होती है या नहीं अबे यार, मेरे को अंकल का कॉल आता है भाई यार, मैं वो साइड जा ही नहीं पा रहा, मुंबई साइड। यार शायद तुम किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करना छोड़ दो। चैट, किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करना छोड़ दो। प्राइम आर्टिक्स नहीं हो हाँ प्राइम आर्टिक्स नहीं हो बे अबे भाई लोग इतना टीएसएफ टीएसएफ, अब तो अच्छा ऐसा लग रहा है ट्रोल ही कर रहे हैं भाई मेरे को। हाँ किया, ऐसा लग रहा है ट्रोल ही कर रहे हैं भाई, लेजिट।
ये बेंचो दे दक्ष ने कर रखा है ऐसा। अबे चैट, बेंच मेरे को जाना है उधर, लिंक्स दे दूं टैग की लिंक्स मिलेगी। अगर आज के स्ट्रीम पे मेरे 800 के होते तो अभी के अभी टैग की आने वाले 1 साल की लिंक दे दूंगा। आने वाले एक साल की सारे कंटेंट क्रिएटर्स, सारे ब्रांड डील्स, सारे कितना किसकी सैलरी है, सब कुछ ऑन स्ट्रीम, ऑन स्ट्रीम। आज के स्ट्रीम पे अगर 800 के होते हैं तो बताओ। ऐश क्या जॉनी पावर नहीं है क्या ब्रो? क्या है ब्रो, कितना फक? 40,000 नहीं बढ़ा सकते तुम? इतना पावर नहीं है क्या जॉनी में? क्या है भाई, हट साला। मैं तो ऐश सोचा था कि एक बारी में बढ़ेंगे। तो हल्का है भाई, हल्का सीन है भाई यहाँ पे, हट। हल्का सीन है भाई, सब काउंट लगा अब। 40,000 तो 40,000 तो ना बढ़ रहे भाई, चिल करो। देख 900 लोग रहे चाहिए। चलो भाई, नाउ वी गोटा सी सम मसाला। क्या मसाला हो रखा है भाई, देखू तो। अबे और फिर वो इंटरनेशनल भी तो चालू हे होने गाइस, वाला ना। कैसे हो आप सब? आज हम लोग बात करने वाले हैं टीम एपेक्स गेमिंग एंड ऐसे ट्यूल के अराउंड वो सीरियस मैटर के ऊपर काफी सारे रिएक्शंस के बारे में, जहां ऐसे पर हर दिन कुछ ना कुछ सीरियस मैटर होते ही एब्सोल्युटली रहता लिमिट्स को है यार। क्रॉस कर सही में मैटर सीरियस होता है कि ये बोलते बोलते सीरियस कर देता है? आधा तो मेरे को लगता है यही बोल के सीरियस कर देता होगा। दिया गया था। फिर बात करेंगे क्या ईडब्ल्यूसी में टीम ओरेंगुटैन का जाना कैंसिल हो गया है, एंड क्या डायनामो की टीम गोल्ड लाइक को ज्वाइन करने के बाद एक्स हाइड्रा मेंबर्स के साथ में काफी अनफेयर चीजें हो रही हैं। तो वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेस का पैकेट खोल लो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं टीम गोल्ड लाइक एंड टीम हाइड्रा के बारे में। तो गाइस, रिसेंटली हमको टीम गोल्ड लाइक की तरफ से जो बिगेस्ट अनाउंसमेंट देखने को मिली थी, जहां पर डायनामो उनकी टीम को ज्वाइन कर लिए हैं। तो काफी लोग के मन में गाइस एक क्वेश्चन उठना चालू हुआ था कि टीम हाइड्रा के एक्स मेंबर्स के साथ में अब क्या होगा, क्योंकि डायनामो के जाने के बाद हाइड्रा को डिसबैंड भी कर दिया गया है। वेल, ये चीज पर गाइस हमको डेंजर, जो कि हाइड्रा के काफी टाइम से मेंबर हैं, उनका एक रिएक्शन देखने को मिलता है, जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात की टीम गोल्ड लाइक को ज्वाइन डेंजर करने ब्रो, के बारे में, एंड डेंजर। साथ ही में बात की हाइड्रा एंड गोल्ड लाइक के जो आवाज ग्रुप्स सही है। गेम हुए थे, क्या वहां पर उनको इनवाइट भी सही है, नहीं किया सही गया। है, गॉड सही लेग है। ज्वाइन करने वाला सिस्टम, तो डायनामो ने क्लियरली बोला कि हम ईडब्ल्यूसी के बाद देखते हैं, ऐसे कुछ करके बोला था कि ईडब्ल्यूसी के बाद देखते हैं किसको लेंगे। तो गॉड लेग मेरा ज्वाइन का सिस्टम तुमको पता है ना, वो डायनामो के हाथ में, वो डायनामो ईडब्ल्यूसी के बाद बोले थे। देखो ग्रुप गेम्स जब तुम बोल रहे हो डेंजर क्यों मस्ती क्यों नहीं आया गॉड लेग साइड ग्रुप गेम्स में, उसमें सिंपल सी बात है, हमको बुलाया नहीं। हेला को मैसेज आया, जलेबी को मैसेज आया डीएम में, व्हाट्सएप ग्रुप में। मामा ने किया होगा, डायना नहीं करता। मामा ने किया हेला को, तो हेला का कुछ तबियत खराब है तो नहीं गई, तो हमको नहीं आया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि हेला खुद से नहीं जैसा, हेला को तो जब बुलाया, जलेबी जब आगे से बुलाया, तो हम लोग को भी एक मैसेज कर लेता तो हो जाता, बट हमको नहीं मैसेज किया। मतलब हम क्या समझे, हाइड्रा में आधे लोग को मैसेज गया और आधे लोग को मैसेज नहीं आया, मतलब इसका मतलब ये होता ना कि उनके साथ खेलना अबे मतलब बंगाली है क्या ये? नहीं खेलना, इसलिए हम लोग नहीं गए। फिर भी वो मैसेज नहीं ना करने के बाद भी हम पागल की तरह नहीं घुसेंगे ना, बहुत गंदा लगता है, बहुत लगती है उधर। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम ओरेंगुटैन एंड भाई क्या है ब्रो? नो कमेंट्स ब्रो, नो कमेंट्स ई ये सब चीज स्पोर्ट्स पे। वर्ल्ड कप के बारे में। तो गाइस, क्राफ्टन इंडिया ई स्पोर्ट्स से रैंकिंग के बेस पर ईडब्ल्यूसी में जो टीम इंडिया रिप्रेजेंट करने वाली है, उसका सेकंड स्लॉट मिला है टीम ओरेंगुटैन को। बट कल अचानक से कम्युनिटी में काफी जगह एक न्यूज फैलना चालू हो गई कि टीम ओरेंगुटैन के प्लेयर्स के साथ में वीजा नहीं है, वो इसलिए ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। है एक दूसरी टीम वीजा? और ये फक, अबे यूरोप का वीजा लगता है ना वहां पे जाने को? शेंगेन वीजा चाहिए ना इनको? है ना, सब है। शेंगेन वीजा तो मिल जाता है। को ही स्लॉट दे दिया शेंगेन जा वीजा रहा है। थोड़ा वेल, ये टफ है चीज के बट ऊपर मिल गाइस जाता है। आकर फिर प्लेयर्स खुद हमको तो मिल रिप्लाई गया था करते वो हैं। टाइम एंड पे। साथ ही में बात की है फ्रांस एम्बेसी के सपोर्ट के बारे में। तो वीज़ा की डेट जैसी आती है अपॉइंटमेंट की, तो हम लोग फिर फ्रांस की एम्बेसी में जाएंगे, जो मुंबई में है शायद। हाँ, तो वहाँ पे जाएंगे एम्बेसी में, सब लोग का अपॉइंटमेंट जब हो जाएगी, तो वो मीटिंग के बाद में हम लोग मतलब फ्री हो जाएंगे वीज़ा के लिए। एंड उसके बाद में हमारे पासपोर्ट उनको सबमिट करने होते हैं, तो पासपोर्ट उनको सबमिट कर देंगे, तो 2-3 दिन बाद मोस्टली होपफुली आ जाने चाहिए हमारे पासपोर्ट वापस, क्योंकि ईडब्ल्यूसी की साइड से मतलब फ्रेंच जो शायद गवर्नमेंट ही है, वो उनकी साइड से बहुत सपोर्ट है, तो फास्ट ट्रैक पे हमारा वीज़ा का जो
प्रोसेसिंग है वो जाने वाली है, तो जितना जल्दी हो जाए तो उतना बढ़िया। बाकी जो भी अभी तक रूमर्स थे यूट्यूब पे कि कोई वीज़ा इशू ये वो कोई और टीम जाएगी, वैसा कुछ है नहीं। तो वैसा अभी तक तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ टचवुड मतलब हाँ पॉजिटिव ही है अभी तक। तो देखते हैं डेट जब भी आएगी हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। और ईडब्ल्यूसी वाले हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं सारी वीजा वगैरह में, होपफुली हो जाना चाहिए। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम एपेक्स गेमिंग एंड SA12 के मेंबर्स के रिएक्शन के बारे में ऑन दैट सीरियस मैटर। वो तो जी ये वाली प्रेस वीडियो में गाइस कंसेशन हम है। लोग बात किए थे वो हस्बैंड वाइफ वाले मैटर के बारे में, जहाँ पर SA12 सेट की वेडिंग पोस्ट पर एक जन काफी घिनौना कमेंट कर दिए थे। फिर उसके बाद जब SA12 सेट लाइव स्ट्रीम करने आए थे तो लाइव पर वो ये कहे थे कि मैटर के बारे में वो श्रीमान लेजेंड से भी बात किए हैं एंड वो जल्दी आकर ये चीज के बारे में लाइव स्ट्रीम पर एड्रेस करेंगे। आप सोल सीड जी को जानते हो, तो उनका मुझे मैसेज आया कुछ चीजों को लेके कि उनके वाइफ को बहुत गलत बोला जाता है। उन्होंने मुझे कुछ कमेंट्स दिखाए, स्क्रीनशॉट्स दिखाए। उनको काफी अच्छी रीच मिल रही है आजकल, उनका और उनके वाइफ का कंटेंट अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ कमेंट जो है वो बहुत गंदे गंदे चलते हैं। मुझे स्पोर्ट्स के बारे में अभी तक तो उतना कुछ पता नहीं, जितना पता है उतना मुझे अभी जो ये टूर्नामेंट चल रही है उसके बारे में पता है। लेकिन इससे पहले स्पोर्ट्स में क्या हुआ है, सोल सीड और जॉनी के बीच में कुछ तू मैं चली है, तो वो उनके बीच में है। अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम सोल सीड को बोल सकते हो, उनके वाइफ को नहीं बोल सकते हो। अगर आपके माँ बहन फ्रेंड को कोई भी गलत नजर से देखे, गलत चीज बोले, तो आपको कैसा लगेगा? कि अगर उनकी कुछ गलती हो इससे पहले या फिर आप उस पर गुस्सा उतारना चाहते हो तो वो आपका लुकआउट है, मैं उस पर आपको रोकूंगा नहीं। उनके फैमिली को गलत चीज बोलना, बहन को या फिर उनके बीवी को कुछ भी गंदी इतनी गंदी चीज बोली जाती है ना कि वो आप सहन नहीं कर सकते हो। तो ये तुम लोग जॉनथन के फैन नहीं हो, तुम लोग कोई कम्युनिटी के कट्टर नहीं हो, तुम लोग गलत हो, तुम लोग टॉक्सिक हो और तुम्हें ग्रो होना पड़ेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं ऐसा समझता हूं कि तुम लोग मुझे बहुत मानते हो सब लोग, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी के कमेंट में गलत मत बोला करो। अबे मेरे को आज तुम मानते हो कि नहीं यार? शायद तुम लोग मेरे को मानते हो कि नहीं? मैं भी बोला यार, तुम लोग यार छोटे हो, मानते तुम ही बड़े हो नहीं। जाओगे ना, तुमको ये बात उस वक्त पता चलने से अच्छा है आज तुम मुझे अपना भाई समझ के बात दिमाग में डाल लो कि अपने को किसी के माँ बहन को गाली नहीं देनी, गलत नहीं बोलना है। सबके कमेंट में अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा मत बोलो। गेम को लेके क्रिटिसाइज करो, गेम को लेके बोलो, उनके परफॉर्मेंस को लेके बोलो, लेकिन पर्सनल मत जाना। पास्ट में अरे भाभी उसने ऐसा बोला है या फिर उसने ऐसा बोला था, ठीक है बोला था, सारी चीजें सीरियसली लोगे क्या? नहीं ना, छोड़ दो। ऐसा समझो कि तुम्हारा दिल बड़ा है, सामने वाले ने बोल दिया ना, ठीक है चल माफ कर दिया, तूने बोल दिया तो बोल दिया, चल छोड़। अब ये गाइस क्या समझ लिख रहे हो भाई चैट में? क्या लिख रहे हो? नहीं 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 लेजेंड के लाइव स्ट्रीम पर कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि पास्ट में खुद सिड मॉम्स जोक मारते थे, तो ये चीज पर फिर वापस से रिप्लाई करते हुए सिड ये कहते हैं, पॉइंट ये नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ये है कि मेरे कुछ करने पे मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए, मुझे गाली पड़नी चाहिए, मुझे गंदे गंदे चीजें लोगों ने लिखनी चाहिए। प्लीज, मैं कोई सिंपैथी नहीं ले रहा, मैं ना मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ना मैं कुछ बोल रहा हूँ, ना मैं किसी स्पेसिफिक क्रिएटर को कुछ बोल रहा हूँ, ना मैं किसी स्पेसिफिक फैनबेस को कुछ बोल रहा हूँ। मेरा बस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपको मैं पसंद नहीं, नो प्रॉब्लम, विल कीप फाइटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, दैट इज ओके, बट प्लीज रिप्लाई मुझे दो, गाली मुझे दो, मीम्स मेरे बनाओ, कीप माई फैमिली आउट ऑफ दिस। मेरे को मॉम जोक्स का आदत था यूके से, वो मैंने रियलाइज किया इंडिया में नहीं करना चाहिए। आई हैव स्टॉप डूइंग इट, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो 3-4 साल हो गए शायद। You will not find anything that I've done in the last 2 to 3 years. I realized it is not a good thing to do. I stopped doing it. It does not justify. बहुत लोग अरे ट्वीट देखा मैंने कि कोई तो पुराना ये ऐसा बोलते हैं तो इसको, that's not a good justification यार, कि मतलब मैं कर रहा हूँ तो मेरे बीवी को इंसल्ट करोगे और मेरे बीवी को आप डिप्रेशन में डालोगे। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा तुम लोग से, दिस इज लाइक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले somebody हैं said that नहीं नहीं ब्रो, देखो जो चीज है ये तो गलत ही है। अगर आप किसी के फैमिली के बारे में बोलोगे तो कोई भी ट्रिगर होगा, कोई भी स्टैंड लेगा, ऑब्वियस है। आपके फैमिली के बारे में कोई बोलेगा तो अब सबका रिएक्ट करने का वे अलग होता है, सबका स्टेप्स लेने के वे अलग होते हैं। इंडियन ई स्पोर्ट्स टीम की एक काफी बड़ी अचीवमेंट के बारे में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की वैलोरेंट लाइनअप क्वालिफाई कर गई है ENC 2026 के लिए एंड आप लोग को ये चीज सुनकर गर्व भी होगा कि एशिया में से केवल 2 कंट्रीज की टीम क्वालिफाई कर भैया मेरे पाई है। नंबर 2 जापान अरे पेरी एंड पेरी नंबर 1 हमारे अबे इंडिया लेती तो पेरी बी टाउन गैंग की की महंगा वाला टीम। लेती। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जी गोड के एक रिप्लाई के बारे Thank you, में। Arvind. तो गाइस इस बार BMPS ग्रैंड फाइनल्स हुआ था जयपुर में, जो कि जी गोड का होम टाउन है एंड इसी के साथ में वो उनके घर पर ऑलमोस्ट 2 साल बाद गए थे। तो ये चीज के बारे में आज वो रिप्लाई करके ये लिखते हैं, 2 साल बाद फाइनली मैं अपने घर गया। कुछ चीजें आपको ये चीज याद दिला ही देती हैं कि फर्क नहीं पड़ता आप कितना आगे चले गए हो या फिर लाइफ में कितना बिजी हो गए हो, बट आपकी फैमिली हमेशा ही आपका बिगेस्ट सा सोर्स लूजी ऑफ idea स्ट्रेंथ बोल, अरे होती है कोई एंड नहीं, वो कोई नहीं, हमेशा चले। आपको याद दिलाते हैं कि सच में क्या चीज मैटर करती है। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ में मोमेंट्स को काफी प्यार से बिताइए, वो काफी प्राइसलेस हैं। बट अब जल्दी मैं अपनी स्ट्रीम्स एंड कंटेंट भी वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मायावी एंड फैशन। ये भोसड़ी का कौन सी संजय लीला भंसाली की मूवी बना रहा है ना, आज तक नहीं पता चला है मुझे। बने ही जा रहा है इसका कंटेंट मैच।
इन्फ्लुएंसर कीर्ति नए थानी के बारे में। तो गाइस ये दोनों की ही तरफ से आज पता है बीच में अपने बोलते थे, पता है इसको जब भी कॉल करता था ना गॉड को, चिल करने बुलाता था जब भी इसको भी बोलते थे मुंह पे। मैं लाला वाला लिक्सल कॉल करते थे, बोलते रहे बच्ची कल का शूट है, बच्ची बच्ची कल ना बच्ची कल के बाद वाला दिन तो 12 घंटा शूट है, ऐसा इस 1 साल इसने बोला है। हम बोले मादर कौन सी तो संजय लीला भंसाली की मूवी बना रहा है रे, खत्म ही नहीं हो रखी है। मैं जो जितना तो शूट करता हूँ उतना तो कंटेंट भी नहीं दिखता हमें। गॉड ऐसा कौन सा शूट चल रहा पोस्ट है आता है ऑलवेज चूजिंग ईच अदर नाउ वी आर भाई। हियर, जिसके साथ में गैस वो काफी सारी फोटोज भी शेयर करते हैं। बेसिकली गैस ये रो का सेरेमनी थी एंड यहाँ से शादी भी कंफर्म हो हाँ? चुकी है। तो यहाँ गैस हमारी तरफ से शादी हो गई। इन्फ्लुएंसर कीर्ति नए थानी के बारे में। तो गाइस ये दोनों की ही तरफ से आज एक पोस्ट आता है ऑलवेज चूजिंग ईच अदर नाउ वी आर हियर, जिसके साथ में गैस वो काफी सारी फोटोज भी शेयर करते हैं। बेसिकली गैस ये रो का सेरेमनी थी एंड यहाँ से शादी भी कंफर्म हो चुकी है। तो यहाँ गैस हमारी तरफ से भी कपल को मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब तो ऑफिशियली टीएजी ऑन टॉप, कोई स्ट्रेस ही नहीं लाइफ में। अब तो सारी चीजें ऑफिशियल हो गई है। जर्सी में वाइब आ रही है कि नहीं है बताओ। यस अभी तो 3 भाई हो चुके हैं, काउंटिंग ऐसे आप पकड़ के चलो क्योंकि है इन फ्यूचर और प्लान्स तो ही, बट अभी के लिए जितने हैं अभी बता रहा हूँ, ये स्ट्रीम पे अगर 8 लाख होते अभी बता दूंगा, मुझे पता है चौथा कौन है, और गॉड नहीं है, मैं बता सकता हूँ कौन वो है। हम लोग मचाएंगे एपेक्स में फुल ऑन, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो कंटेंट हो, हर जगह आपको अपने हम लोग दिखेंगे। हम मतलब अभी छोटी फैमिली है, धीरे धीरे स्टिल काउंटिंग वाला सीन होगा। जो प्लान्स हमने सोची है, जो गोल्स है हमारे, वो एकदम मैच हुए एंड यस तुम्हारा भाई आ चुका है। चाहे मेरे को मुंबई शिफ्ट होना पड़े, मैं हो जाऊंगा। जो कमिटमेंट्स मैंने दिए टुवर्ड्स दिस ऑर्ग, टुवर्ड्स माय ऑर्ग, मैं मेरी ही बोलूंगा क्योंकि अपनी ही है, तो वो कमिटमेंट मैं फुलफिल करूंगा। मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अरे अभी जो एक दिन का ब्रेक लिया था, मैं मुंबई गया था, तभी ये वाला शूट वगैरह हुआ था। टीएजी मतलब जॉनी ने जब टीएजी बनाया था तब से कोई प्लान्स नहीं थे। सडनली बीएमपीएस के अब एक चूते लिख रहा है क्रॉन्टन है। अबे तू कहाँ से आया है भाई? क्रॉन्टन को एपेक्स क्या आना था तो। पहले जब मैंने गॉडलाइक छोड़ा उसके बाद पूरे प्लान्स बने एंड क्विकली सारी चीजें हो गई, पता भी नहीं चला। जीगॉड कब आएगा? अबे मतलब क्या आप क्या समझ रही हो, मेरे को क्या पता। अभी जीगॉड जहाँ पे है वो खुशी है ब्रो, लेट हिम एंजॉय, कोई स्ट्रेस नहीं। बाकी जीगॉड अपना भाई है, वो ऐसा पकड़ के चलो, टीएजी में भी है, गॉडल में भी है, कोई स्ट्रेस नहीं। जॉनी के सुपर चैट ये गागिया, तू तो साले असली गागिया खेल रहा है। एक पैर इधर एक पैर उधर। करिए वो सेकेंडरी, बट हमारा जो है भाईचारा जो है उसका कोई तौल ही नहीं है ब्रो, पैसों से तौल नहीं है। अभी जो हम लोगों ने प्लान करके चीजें की है ना ब्रो, मजा आएगा। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जोनाथन वर्सेस गॉब्लिन के बारे में। तो गाइस बीएमपीएस के बाद फर्स्ट टाइम आज हमको एक मैच में जोनाथन वर्सेस गॉब्लिन देखने को मिला, जिस पर गॉब्लिन का लाइव रिएक्शन भी आया। फर्स्ट ऑफ ऑल जोनाथन उनकी स्टोरी में एक पीओवी को शेयर किए थे। चल जा फिर इधर दोनों साइड देख लो, उसका मनी चल रहा है बढ़िया। जॉनी इधर देख, बढ़िया एक यहां पर है। जॉनी उधर देख, उधर देख, उधर देख। अब इसके बाद गए जो टाइम पर ये मूवमेंट हुआ वो टाइम पर हेक्टर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जहाँ पर हमको हेक्टर एंड गॉब्लिन का भी रिएक्शन कैप्चर होता हुआ दिखा। जॉनी वर्सेस गॉब्लिन वर्सेस सोल। अरे बाप रे, मैं बंजान ले लूं क्या इससे? जो जा ले ले। जॉनी वर्सेस गॉब्लिन, लेट्स गो। है ही नहीं यार, है वरना कोनी थोड़ा पीछे चल जा फिर इधर दोनों साइड देख लो, उसका मनी चल रहा है बढ़िया। जॉनी इधर देख, बढ़िया एक यहां पर है। हार्ड वे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम गॉडलाइक के एक पोस्ट के बारे में, जहाँ पर वो शेयर करते हैं टीम गॉडलाइक के चैंपियंस बनने के बारे में एग्जैक्टली क्या। एक बार बोलूं तो ये बोल रहे थे अब मौत बोट गए थे। अब मैं ऑफिशियली कह सकता हूँ, अब क्या पिछले 2 महीने से मैं कह सकता हूँ कि मानिया इज बैक। अब भगलो साल, अब वो बहुत मारेगा। क्या आज नीचे दिन के शुरुआत में एंड ऊपर आ जाएंगे। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट टीम गॉडलाइक, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं उनके एंड टीम ओरेंगुटैन के बारे में। तो गाइस दोनों ही टीम्स के बारे में जो हमको जल्दी उनके इंटरनेशनल स्क्रिप्स में जाकर प्रैक्टिस कौन सा गेम खेल रहा है बे चैट ये? वो चीज के ऊपर आज एक काफी बड़ा अपडेट है। टीम ओरेंगुटैन के बेसिस पर रिप्लाई करते हुए ये कहते हैं, मॉडल को भी थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के इनपुट्स देना इंटरनेशनल का। अगर उन्होंने हमारे गेम पे देखा होगा इंटरनेशनल, तो नहीं जनरली बोलो, जनरली उनको पता होगा कि हमने कहां गलतियां की। हां वही, ऐसा कुछ था नहीं, मतलब उनको
जो हम बताएं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं खेला, पर प्रेशर मत लें बस मेरे हिसाब से, तो बाकी तो सब हमने उससे बड़ी गलती वही की थी हमने, प्रेशर ही लिया था गैस। और इंटरनेशनल स्क्रिम्स कहाँ से खेलोगे पता नहीं यार, अभी ब्रो अभी जुगाड़ ही कर रहे हैं, कुछ हो जाए तो। या प्रेशर नहीं लेना, स्किल्स तो सेम ही है ना चैट? पता नहीं, स्किल प्रॉपर सेम नहीं है। पता शायद क्या, मतलब प्रॉपर एकदम बता नहीं सकते कि क्या सीन है, बट वही है कि डेली स्ट्रीम्स खेल रहे हैं, और मेनली तो जो बाकी टीम्स हैं समझ रहे हो, जो ईडब्ल्यूसी के लिए क्वालिफाइड हैं, उनका भी टूर्नामेंट होने वाली मकाऊ इनविटेशनल, तो वो देखेंगे और ट्राई करेंगे उनसे जितना हो सके। जैसे ही हम चारों का वीज़ा का सीन डन हो जाता है वैसे ही हम लोग निकल जाएंगे नेपाल के लिए, एंड वहाँ हम लोग मोस्टली जुलाई में 25 से 27 डेज तक प्रैक्टिस करने वाले हैं बाहर की टीम्स के साथ में। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। वो बात की है जोनाथन की न्यू कार के बारे में। तो रिसेंटली गाइस जोनाथन उनकी न्यू कार को रिवील किया है, मैं वेट नहीं कर सकता कब इंटरनेशनल चालू हो गया, देन यू नो। मैं बस कंट्रोल करके रखो भाई, बट वो तो किक पे करूंगा मैं, क्या यार किक पे करूं वाईटी पे करूं भाई, मेन वाईटी है परचेस भाई। कर लिए थे, पर लुक्स लाइक करता वो चीज धरता के बारे हमारा, में कुछ लोग स्काउट के चैट में बट कुछ लिख रहे थे, जिस पर पैसे reply पूछे करके वो किक ये पे कहते ज्यादा हैं। है। मैं देखा M5 इज गुड मैन। मेन क्या पता है, M5 CS है वो गाइस, अगर आप लोगों को अबे knowledge ये मैंने नहीं है। देख रखा है भाई, इससे पिछले वाली वीडियो में भी ये ये डाल वाला रखा सीन है। था। और रही बात, अगर आप लोग किसी को सेकंड के लिए ट्रोल कर रहे हो, ब्रो दैट कार कम्स फॉर 2 to 3 CR इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप अगर 2 से 3 CR वाली गाड़ी सेकंड में ले रहे हो तो आप भी खरीद लो, इसमें खराब बात नहीं है। तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसा किसी को भी आप जज मत करो, फिर लोग आपको जज कर देंगे कि स्प्लेंडर से आगे देखा नहीं है, ज्ञान दे रहा है दूसरे को, वो वाला सीन है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है ओवीएस की तरफ से। वो बात की उनके वाओ मोड्स प्रोजेक्ट के बारे में, एंड साथ ही में बीजीएमआई में जो उनका वॉइस पैक आने वाला था उसकी हवेली की तरफ से। तो वो बात की इंडियन यूट्यूबर्स एंड इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के बारे में। अब दोनों ही लाइव स्ट्रीम पर गाइस गेम्स खेलते हैं, बट चैट का क्या रिएक्शन रहता है। एंड साथ ही में बात की गाइस उनके वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के बारे में। बिग्स एक बात बता, हम लोग, मैंने नोटिस किया हम लोग सब इतना लाइक करते हैं बाहर के, मेरे इंटरनेशनल स्ट्रीमर्स को देखता हूँ वो बस चैट से बात करते हैं और मस्त खेलते रहते हैं। क्योंकि वो लोग का मेन वाइटी नहीं है। क्या है उनका मेन? ट्विच, किक, टिकटॉक वो सब है। हम लोग का किसी मेन वाइटी है ना, हम लोग लाइक बोलते हैं, ट्रेंडिंग में आने का जो फंडा रहता है, लोग गिर जाते हैं कि भाई लाइक मारो। अब तुम रहेगा, तुम गिरने की बात कर रहे हो लाइक के लिए। अमन को देखो गाप दे दिया उसने। जो तुम्हें बॉडी बिल्डिंग कंपनी में कम्पीट कब करोगे? नवंबर इंशाल्लाह। अभी तक आप लोग भी वीडियो अपडेट निकल कर आती है डेंजर की तरफ से। वो बात की है रेड बिट एंड डायनेमो के बारे में। तो कुछ दिन पहले गाइस हम लोग बात किए थे रेड बिट के एक रिएक्शन के बारे में, जो टाइम पर जस्ट डायनेमो गेमिंग टीम को लाइक को ज्वाइन किए थे। मे भी डायनेमो ने अपने क्रिएटर्स, डायनेमो के तो पीछे ही पड़ गए बे सब, हाथ धोगे क्या ब्रो, सांस लेने दो। अबे मॉडरेटर्स हो तो तुम लोग देखते हो तो इनको टाइम आउट क्यों नहीं देते, ये जो स्पैम कर रहे हैं। इसके लिए कुछ प्लान किया होगा, ही इज अ लीडर ऑब्वियसली, तो कुछ तो सोचे होंगे। तो रेडबिट के वो रिएक्शन के बाद काफी लोग ये चीज के बारे में डेंजर को लिख रहे थे, जिस पर रिप्लाई करके वो ये कहते हैं। देखो रेडबिट की अपनी ओपिनियन है, ठीक है। जोनाथन गॉडलेग छोड़ दिया, कुछ रीजंस होगा उनका, गॉडलेग से कुछ रीजंस होगा उनको छोड़ने की, जोनाथन ने छोड़ दिया। भले उनके बीच में फ्यूचर में जाके कुछ कंट्रोवर्सी हो गया, टैग वर्सेस गॉडलेग हो गया या ओनर वर्सेस ओनर हो गया कुछ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डायनो भाई जोनाथन से बात करना बंद करेगा, समझ रहे? नहीं ना, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में ना, बाकी दो पार्टीज के बीच में लफड़ा ना, वो डायनो भाई भले अभी कॉर्नर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि डायनो भाई भी बैठ गया कि भाई मैं जोनाथन को ये कर दूंगा, जोनाथन को ये कर दूंगा, समझ रहे? नहीं ना, वो पास्ट में उनकी जो भी इशू है उनकी वो सेपरेट हो गया। डेरबिट और हाइड्रा का जो भी मैटर है उन दोनों की पार्टी का है, मेरा कुछ लेना देना नहीं ना उनसे, उनको जो कैसे लेना देना नहीं है ब्रो, दो ना आपची मसाला खत्म हो जाएगा तो मैं किस पे रिएक्ट करूंगा डेंजर भाई। ओवेस की बात आती है तुम्हारी जी जल जाती कि ओवेस भाई कौन से, ओके मैं समझ सकता हूँ। नाजमुल हक, नाउ आई गेट इट, क्यों आप मुझे सुपर चैट कर रहे हो। अब आप वापस करोगे है ना, क्योंकि मैं सोहेल भाई का भी स्किप कर दिया। स्टार्टिंग में टीम के आईजीएल हुआ करते थे, पर उसके बाद वो उनके गेम प्ले को चेंज किए थे, यानी का सोल्टर बन गए थे। बट रिसेंटली बीएमपीएस में टीम मैटिंग स्पोर्ट्स की जो हमको परफॉर्मेंस देखने को मिली, काफी लोग इसके बाद उनके चैट में वापस से ये लिख रहे थे भाई यहाँ पे सोल्टर से वापस आईजीएल बन जाओ, जिस पर रिएक्ट करके वो ये कहे। यार आपको ओवेस भाई का देख रहे हैं तो ये देखो ना, ये वीडियो देखो, गेमिंग न्यूज 15K डार्क रियलिटी, ये सर्च करो और ये वाले सेगमेंट पे ये देखो। हाँ पता नहीं है ना ब्रो। This is a simulation game set in a virtual world, real life. Please play in moderation and play responsibly. वो बहुत कम है भाई, कोई खराब खेल रहा है तो मुझे देखकर बहुत गुस्सा आता है, कुछ कर नहीं सकता उसको। बता बोलो कैसा गुस्सा करता हूँ, रुला देता भाई सामने वाले को। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। आपका लेस का पैकेट भी ये लाला का ना, ये लाला लौड़ू का ना, ये वाला माइंडसेट ना बहुत गलत है, पता है। इसको लगता है मैं रुला दूंगा सामने वाले को तो अच्छा खेलेगा। मैंने उसको कितने बार, पता है चैट, मैंने कितने बार मैड किंग्स में उसको बोला है कि लाला तू ऐसे पहले नहीं था, टीएसएम के टाइम पे, टीएसएम पे तू एकदम चिल खेलता था अपना अपना,
ठीक है, देखो भले देखो गुस्सा आता भी रहेगा बट तू मोटिवेट करता था। जब से लाला ने गॉड लाइक छोड़ा है, लाला ने मेरे को लगता है ऐसा ठान लिया था कि मेरी इतने टाइम तुम लोग ने मार रखी थी। जब मैं गॉड लाइक टीएसएम में तो बहुत मारते थे तुम, मेरी मैं आईजीएल था। अब मैं सबकी मारूंगा कम्युनिटी में। जो प्लेयर लाला के टीम, लाला ने इतनी मारी है ना उसकी, इतनी बंदा रो दिया है चैट, वो बंदा डिमोटिवेट हो गया रहेगा। और मैं उसको बोलता था लाला को कि लाला तू ठीक है, खराब खेल रहा है, खराब खेल रहा है तो तुम गाली दोगे उसे तो वो अच्छा थोड़ी खेलेगा। खराब खेल रहा है तो खराब ही खेलेगा, वो तुम्हें मान के चलना है कि अब हो गया खत्म। यार स्टैबी जी को वो दिन अपन ने वो करा था। और क्या मसाला है, बस इतना ही था आज का, इतना ही माल पानी है। माल पानी खत्म, कुछ है कि नहीं। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आज लाला, हाँ बस लाला ने अगर अपनी ये चीज सुधार ली ना तो ऑलराइट गाइस, इससे पहले कि हम लोग ये रिएक्शन कि वो सेपरेट हो गया, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता, है कि नहीं। और ये चीज मेरे ख्याल से मस्ती ने भी ये चीज बोली है कि वो दोनों के बीच का मैटर है। तो मैं अरे हटाओ डायनामो भाई के सब डिस्ट्रिक्ट मारो है, हाइड्रा बंद करो, खत्म करो किस्सा। अबे मस्ती जोन, मस्ती जोन रो रहा है। यार क्या सब लिख रहे हो यार चैट में, व्हाट द फक, द फक ब्रो। गलती तो मैंने सॉरी बोल दिया, सब हो गया, बट यार अबे अल्फा को कल, अबे अल्फा बढ़िया बंदा है पता है। अबे अल्फा को मैं मिला ना कल अल्फा की बहुत मारी कल पता है। कल कोई तो एक ये था, कल एक शूट हुआ था, कल शूट के लिए गया था मैं। अबे बहुत बढ़िया बंदा है भाई, बहुत बढ़िया बंदा है भाई, पता है मस्त है भाई, मोटा भाई एकदम। मेरे को तो बढ़िया लगा भाई, सबसे अच्छा मेरे को भाई, सबसे अच्छा मेरे को अल्फा लगा भाई, पता है बढ़िया एकदम भाई, पूरा फर्स्ट टाइम में ही पूरा चिल मस्त है भाई अल्फा एकदम, पता है भाई। रिगार्डिंग स्किल्स जितना मैंने देखा, अगर एस्पावर एंड को पंप हो जाए तो सबको मार देंगे भाई। देखो सबको मार देंगे तो ये आपने बहुत ज्यादा एक एग्जैजरेटेड सा स्टेटमेंट दे दिया। क्योंकि देखो आपको वो दिन मैंने बोला कि अपने इंडिया में एक एस्पावर है ना, एस्पावर के स्किल सेट के कितने हो गए अपने इंडिया में, बहुत रेयरली, दो तीन गिने चुने। जितना फास्ट एस्पावर खेलता है, जो गेम से एस्पावर का जो गन पावर वो कैरी करता है, बाहर कंट्री में एक एस्पावर नहीं है, हर एक टीम में एक एक दो दो एस्पावर है। मतलब वहां पे 70, देखो वहां पे हर कोई एस्पावर के लेवल का खेलता है, और फिर उसमें आ जाते 20-30% लोग जो उसके एक लेवल ऊपर खेलते हैं। समझ रहे हो आप। रियल मोटा भाई 40 रुपीज अल्फा पाशा, क्या सीरियस खेला कर। अरे अल्फा 40 रुपए का सुपर चैट, कल 5 लाख जीतने वाला था तू क्या सीरियस खेला। अबे भाई अभी अभी तो रिवील नहीं कर सकते ना क्या हुआ, जब वीडियो आएगी ना, जब वीडियो आएगी तब 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 पता लगेगा। अल्फा ले क्या मैं नहीं देख सकता भाई हाइड्रा बंद होते हुए भाई, यार, genuinely मैं- अबे क्या हाँ भाई देखो मैंने सुना ना ये चीज भाई, मुझे मेरे को भी खराब लगा था भाई जब टीएसएम तो बोला कि क्या गांडू हटना यार, मैं कॉल कट करने वाला था जिसने मुझे बताया उसका। ये हो ही नहीं सकता, मैं मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे यार, मुझे नहीं पता गाइस, जब तक रिवील करा कि ऑफिशियल सोर्स से। मेरे चैनल पे अगर मैं कीवर्ड सर्च करूं ना हाइड्रा, भाई तुमको लिटरली 1500 1700। अबे बेंच, अबे मैं टकला दिख रहा क्या वैसे? अब सही है शिट। वीडियोस मिल जाएंगी भाई। अब तक मैंने अपने चैनल पे कितनी वीडियोस मैंने हाइड्रा के साथ डाले हुए हैं, हाइड्रा का नाम लगा के डाले हुए हैं, और उसे ये वाली अनाउंसमेंट तो इंस्टाग्राम पे डाली थी आई थिंक। तो मतलब ठीक है भाई, हाइड्रा तो थी ना, अभी तो भाई मतलब आगे अभी देखना वीडियो में भाई।
भाई मुझे लिटरली कोई टाइम मशीन बना के मुझे भेज दो 4 साल पहले, मैं भाई 200 गुना मेहनत करके बचा लूंगा भाई वापस सारी चीजें। फूट के में रह के भाई मैं लिटरली लोगों के गाँव में घुस जाता था कि भाई आज रात को ग्रुप गेम खेलनी है, GTA खेलना है, आओ साथ में खेलते हैं, बढ़िया सब साथ में बहुत किया भाई मैंने भाई, मतलब मैं उससे भी ज्यादा करने के लिए रेडी हूँ भाई, बट ये नहीं मुझे देखना भाई। मंकी जब मुझे लाइव पता स्ट्रीम नहीं कब क्या से तुम ना लोग chat कर करके क्या लाडले, अब सोचोगे, सब सही चल बट रहा ये है, नहीं फिर से देखना है भेजना भाई, है मेरे क्या को मुझे? हजम ही नहीं हो गया अभी भी। बनाना चाहते हैं एक पूरा इकोसिस्टम इस तरीके से बनाना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट देखने मिले फ्यूचर में, बहुत सारा आईएल ज्वाइन करने का। लाइव स्ट्रीम्स भी करिए यार, मतलब ग्रुप गेम के पीछे पड़ा था भाई, आओ और आगे कम्युनिटी में मसाला कम हो गया है, साथ ही सामने आज शायद देखो रिलीज थोड़ी होगा। देर। हमारा ये जो मोटिव है ना अभी ज्वाइन करने का, दिस इज सोली एंड सोली पर्पस, जहाँ पे हम लोग ग्रो करना चाहते हैं सामने वालों को भी और खुद भी ग्रो होना चाहते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम इस तरीके से बनाना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट देखने मिले फ्यूचर में, बहुत सारा आईएल कंटेंट देखने मिले, आईएल ब्लॉग्स, ऑनलाइन कंटेंट, ठीक है, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स या फिर मे बी शायद से चैलेंजेस वीडियोस या पता नहीं क्या क्या चीजें, वो सब आपको फ्यूचर में देखने मिलेगा ही मिलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो लोग हमारे भाई थे, हम उनके भाई थे, चाहे पूरे मोहल्ले में किसी के भी कारनामे कांड चलते रहे, बट हमारा कभी कांड हुआ ही नहीं, हमारे कभी कारनामे हुए नहीं, हमारा हमेशा भाईचारा रहा है, और एक्चुअली भाईचारा रहा है हमारा, है ना। कुछ लोगों का बस बोलने के लिए भाईचारा था, बट अपना भाईचारा तो हमेशा रहा है, आप लोगों ने देखा ही है guys, है कि नहीं, हमेशा भाईचारा रहा है। और उस भाई मुझे नहीं पता कि मुझे बोला गया है कि किसको बोला गया है भाई, मुझे तो लग रहा है भाई ये सारे हाइड्रा के लोग मुझे मिलके जब ये लाइन बोली ना कुछ लोगों को बोलने के लिए भाई था भाई, मुझे लग रहा है मुझे ये लोग टारगेट करेंगे मेरे। भैया ये लो, तो मैंने उससे सामान ले लिया और बजा दिया टैंक के नीचे आगे जाके, बस और कुछ नहीं है। तो उस टाइम से हमारा भाईचारा रहा है। आप सोचो, वी आर ज्वाइनिंग एज आप कह सकते हो पार्टनर, को ओनर, ओनर, तीन संभालनी है भाई, पार्टनर, को ओनर और ओनर, 3 ओहदे मिल रहे हैं डायनामो को। ओनर को ओनर, यस ओनर को ओनर, सॉरी पार्टनर। मेरे को क्यों लग रहा है कि ये रोस्ट कर रहा है अल्फा, तो ये सही में लेजिट बोल रहा है भाई, जो समझ नहीं आ रहा है। को फाउंडर नहीं कह सकते इस चीज को, बिकॉज़ एक मैंने को फाउंडर लिखा था चैट में, को फाउंडर नहीं कह सकते इस चीज को, बिकॉज़ फाउंडर्स वो होते हैं जो उस चीज को डे 1 से तो को फाउंडर किसको बोलेंगे गाइस 6 साल पहले का? जस्ट जोकिंग, मत जल्दी कर रहा हूं। अरे देखो भाई 2019 वालों के लिए फाउंडर को फाउंडर का नहीं समझ में आना ना, देखो अबे पता है कहाँ जाएगा? मस्ती जोन आता है लैन पे, मस्ती जोन लैन पे आके बोलता है पाशा भाई यार तुमने मैड किंग्स की भी जर्सी दे दी, तुमने मेरे को आरएनटीएक्स की भी जर्सी दे दी। तो मैं उसको बोला अबे पगले मैं तेरे लिए जर्सी कलेक्ट कर रहा हूँ, अब इधर आधी ऐसी, इधर मैड किंग्स की एक पूरी जर्सी आएगी, इधर आरएनटीएक्स की पूरी जर्सी आएगी, ऐसे 5-6 जर्सी लगेंगे। मस्ती जोन तेरे को एक बारी में दूंगा जर्सी में, सारों को स्टिच करके। भाई तुम लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हो भाई हम लोगों को, क्या ही कर रहे हो भाई तुम लोग, मतलब क्या होप लेकर बैठे हो? एक ई स्पोर्ट्स लाइनअप ही आ जाए तो भी एक जर्सी नहीं होगा मस्ती जोन। मेरे पास हो ना खूब सारा पैसा, मैं तुम लोगों को ऐसा खुश कर दूं ना भाई कि ये लो तुम्हारे को कंटेंट चाहिए, ये लो सब कुछ कर दूं। थैंक यू। ऐसा रखा है, और ये अभी बात कर रहा है कि अलग से काम करो, बावली कमेंट इधर मेरा ऐसा हो रखा है दिल कि मेरी हाइड्रा खत्म हो गई, बंद हो गई, ऑपरेशंस बंद हो गए, मेरे इतना स्ट्रेस हो रखा है, मैं तुम्हें बता सकता। स्ट्रेस मत ले, स्ट्रेस साले स्ट्रेस ईटिंग करेगा फिर तू। मेरी हाइड्रा कहाँ हो गई, स्ट्रेस कहाँ मत जाएंगे, ले। भाई कहाँ जाएंगे, डेंजर भाई कहाँ जाएंगे, जलेबी कहाँ जाएगी, हला कहाँ जाएगी, मामा कहाँ जाएंगे, जलेबी खा जाएगा ये? स्ट्रेस ईटिंग, दादी कहाँ जाएगी, और तुम लोगों को ये सोच रहा है कि भाई अलर्ट साइज काम करो। अरे मैं शांति हूँ भाई, क्या करूँ, इमोशंस कैसे कंट्रोल कर लूँ मैं, क्या ही बोलूँ। हम भी जाते पता नहीं क्या हुआ भाई। जलेबी सीसी है। मैच स्टार्ट। ओए ओए ओए, लाडले रोते नहीं है, पगले रोते नहीं है। क्लोज होगा हम थोड़ी अपना यार, समझ नहीं रहा यार मैं क्या करूं, ऐसे थोड़ी होता है यार। अबे दुनिया थोड़ी खत्म हो गई, तो ऐसा तो होता तो है। जब मेरी भी टीम जब टूटी थी, वो मेन टीम, होता है प्रोसेस करने टाइम लगता है, बट कुछ ना कुछ हो ही जाता है लाइफ में। एक साल तो मैं भी घर पे था ही है, जब कोई और का वो सब सीन हो रखा था। ऐसे हंस रहे हो तुम, देखो भाई टू बी ऑनेस्ट, अगर मस्ती तुम देख रही है इस चीज, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि खत्म हो रखा है सब, मे भी कोई बेटर चीज आगे है फ्यूचर में, और रहेगी यार। कितने सबसे मस्ती जोन के कितने सबसे चैट PMMI लगाओ। हाँ मैं बस एक्टिंग ऐसी है। तो मुझे वो फैन हो रहा है भाई अंदर से कि क्या हो गया, बाकी सीसी तो गांडू है, तो फैन हो रहा है भाई अच्छा खासा।
154 250 के, हाँ नहीं नहीं 250 होता के जैसे समथिंग है समझो ना, कम नहीं है बड़ा काम करते 250 रहेंगे, के जैसे हम भाई। पहले आते थे, हम आएंगे लाइव, हम गेम खेलेंगे, हम चले जाएंगे, कभी मन हुआ तो कोई रील डाल देंगे, कभी मन हुआ तो इस ओके भाई, शेयरिंग ऐड कोई कंटेंट डाल देंगे, दैट्स इट। और रही बात कंटेंट की, तो भाई कंटेंट के लिए ब्रो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तुम सीधा मुंह उठा के नहीं बना सकते कंटेंट। और जो कंटेंट मैं बनाना चाहता हूँ उसमें लगते हैं पैसे, उसमें चाहिए लोग, उसमें चाहिए टीम। मेरे बस की नहीं है इतना पैसा फूकना, मेरे जब बस की थी, मेरे पास पैसे जुटते थे, तब अपने कंटेंट डाल दिया, ठीक है, नहीं चला कंटेंट, किसी को चल तो चैट मेरे को एक चीज बताओ, जो जो ये हाइड्रा था, हाइड्रा एक्स जीडीआर था, या उसके पहले जो हाइड्रा था, तो हाइड्रा को पे होता था क्या, मतलब सबको पे होता था या ब्रांड डील्स ऐसा, मतलब ऑर्ग जैसी थी क्या हाइड्रा? नहीं लगी स्टोरीज, नहीं मिला वो सपोर्ट जो मिलना चाहिए था, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन भाई, मतलब कोई मैं सुपर चैट ऐसा ऑर्ग जैसी थी क्या हाइड्रा, या ना ऑफ कोर्स ऑर्ग, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑर्ग, और जस्ट मतलब क्लैन, यू मीन क्लैन जैसे होता है? भाई कल ब्राजील वैसे जापान देखा था, बहुत क्रेजी था चैट, बहुत क्रेजी, फक, एकदम 90th मिनट पे जो डाला है क्लैन। इंडिया की यही आदत है हर चीज में कंपेयर करना, इसलिए इंडिया आज इतने पीछे। एक चीज नोटिस करना, सक्सेसफुल होने वाले लोग कभी कंपेयर नहीं करते, बस काम करते, रिजल्ट आगे क्या होगा देखा जाएगा। 3.7 के पोल वोट्स है, बट 2.9 के लाइक्स। अबे लाइक करो, हाँ लाइक करो। ग्रुप का बख्शो, बंदा ही ग्रुप का इमोशन होता है। हाइड्रा ऑर्ग थी लेकिन प्रॉपर स्पॉन्सर नहीं थे तो प्रॉब्लम बढ़ गई। यार डायनामो था वहां पे तो हो सकता है। ब्रो कल का हाईलाइट देखो, एनालाइज करो टूर्नामेंट का। अबे भाई ये वो है क्या जिसने बीजीएस इनकम क्वालिफायर्स के टाइम पे दूसरी टीम का गेम खराब करा था और कुछ बोल रहा था? कौन रे, किसकी बात कर रहे हो? देखो यार, अपने को ये टॉपिक पे कुछ पता नहीं, अपन तो बस देखने के लिए वीडियो देख रहे, तो आप मैं तो कुछ कह नहीं रहा ये चीज पे। वॉच अलोंग करना, फीफा वर्ल्ड कप का पाशा वॉच अलोंग करते हैं तो काशवी करती है वॉच अलोंग। आप काशवी को जाके, काशवी इंस्टा पे स्वाइप अप डालते तो है काशवी, वॉच अलोंग फीफा का, जिनको भी फीफा देखना है आप देख सकते हो, लोग देखते हैं बैठ के। Yesterday we were kind of talking about, right, which is going to be, is it स्टार्ट हो रहा है मैच, आप भी ऐसे ही। फ्लक्स कौन है प्लेयर? फ्लक्स कौन सा प्लेयर है शायद फ्लक्स? आप भी ऐसे ही नहीं रहे। पाशा भाई यार, टीएसएम एंटिटी रीनाइट, अरे अब देखो मैं और घातक तो है, ठीक है, लाला भी आ जाएगा, जॉनी और जीगॉड को आप बोल दो हो जाएगा बस। कितने मैचेस है? 6 मैचेस है, 6 मैचेस है ना, कौन से आज, कौन से क्या है? कोर्ट पार्टिसिपेटिंग टीम्स, अरे भाई 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 अचीवमेंट्स देखो तो मैच, 3 दिन का वो, 3 दिन का फाइनल्स, कोर्ट पीएमसीओ, पीएमजीओ सीजन 1 #2। ऐसे ऐसे तो पीएमजीसी जीती थी। ये पीएमजीओ सीजन 1 ई, पीटीआर, टीके, डी प्लस किया, ईए, फ्यूरिया, आईएनएफ, कोने, केएसजी, एलजीडी, पीईएल, दो पीएल की टीम है, वाह। पीएमजीओ, एनएस, नोंगशम, रेंगनम कार्या है ना, आरआरक्यू, एस2जी, तियानबा, टीटी, टीटी कौन सा? थंडर टॉक्स, हाँ थंडर, थंडर टॉक्स ना चैट। यूएल है, यूएलएफ, डब्ल्यूबीजी, डब्ल्यूबीजी भी है, वुल्फ, वाईजी कौन सी है? वाईजी का नाम, वाईजी अभी जीती थी ना पीएमडब्ल्यू से, हाँ, और एजी, हाँ 440, 440 यूएसटी to INR, like unit
टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ले बहनचोद बैठे बैठे 4 करोड़ का टूर्नामेंट करा रहे बैठे बैठे 4 करोड़ का टूर्नामेंट भींच बैठे बैठे ओ ब्लू Short to Anma for between Thailand भाई and अरे ये नहीं है रे 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 ये BTR up to 7, steps forwards with the shotgun with a ब्रांडिल कब आ रही है मेरे लाडले आ तो रही है BTR, they have 49 points, so they're pretty much set. But the rest of the squads here, yeah, we want to put some points on the board big time. Yeah, of course, looking at all the map rotations, same as yesterday, is going to be the same every single day here for PMMI. बता रहा जिम देखते देखते प्रोजेक्ट कर रहा हूँ क्लास का But I wanted to open up the conversation अच्छा with है you a little प्रोजेक्ट bit ही here, कर रहा हूँ कुछ Hodges. और Which नहीं कर team रहा from हूँ Group देखते हैं Yellow do you think is going to अबे इधर भी ओल्ड अबे क्या अबे दक्ष ने मेरा मेंटालिटी बहुत खराब कर रखे हुए Group Yellow. Let me सीजी को सारी I think मिलता है we'll see क्या Weibo come out really, really Without strong, Order? especially. I mean, I think considering ऐड that they've already done बावे ऐड नहीं डालूंगा तो पैसा कैसा आएगा मेरे को they have a lot to. मेरे को पैसा कैसा मिलेगा Hopefully, they're the squad that can say, "Hey, ऐड कम करूँगे right? बहुत ज्यादा Even डाल though we रखिएगा won one, we're gonna also पैसा भी तो continue ये to win अबे another तो one back to वो back. रहता है ना भाई That'd be great to watch. चलो मैं I think Ulf as well. You know, Ulf भाई are gonna be coming out really strong. We saw a lot. 12 of मिनट really में एक good ऐड things आती है for them भाई last चिल tournament. करो बे What do you think? I feel like Ulf is a slow burner. I feel like they get better longer the tournament goes on. कितने बजे मैच स्टार्ट है भाई Maybe not going to pop off here, but I'm expecting top 15 should be relatively easy for मैं them. Of खाना course, खा लूँ क्या let's check out the leaderboards before we dive right into our first game. ये क्या हुआ उल्वे उला is going to be Al Ula from the MENA region and अबे मीना रीजन बहुत स्ट्रांग है they're not रे playing today, right? Because they are in group green. So we're going to be able to see a lot of teams try to play catch up and overtake them. LGD, USGD, TTR, Big Strong's going to be Aurora. so a lot of teams are going to have the opportunity to overtake them. So who's going to be the new first place team? Going to be a tough one, but really, if you have a banging day, I would love to see. Genuinely, I would love to see a team from Group Yellow be first place. Having the सोचो गेम मैन नहीं होता तो आज सीन कुछ अलग होता It's unrealistic, but oh, that would be cool. Come on. That would be crazy. Yeah, for a team in Group Yellow. फिर तो अब मेरे को और to जॉनी को भी be in 4 फिंगर first शिफ्ट करना place पड़ता है today, अगर that गेम मैन नहीं means होता that तो अभी they तक beat इनके साथ 8 कम्पीट करने के लिए squads that had 6 more एड ब्लॉक कर matches अबे वो to बुllshit Yes. That would be wild. I mean, it's totally possible. We've seen something like that in the past, right? खाने को We'll see just how hard they come today. And I mean, the good advantage that they had was they were able to watch all of yesterday's matches. Yeah. You know what I'm saying? So I'm sure they did their homework big time when it comes to Group Red. And that could make things for, you know, a little bit more difficult for Group Red here today. But you have to adapt and you got to overcome if you want to be able to get some of that big money coming up down the line. Yeah, I mean, actually, most of the teams that yesterday that did poorly were teams from Group Red, right? Wolves didn't do great, RQ didn't do great, Alpha 7 Yangon didn't do great. We didn't see much from Tiamba. The only teams that really did something were LGD and S2G, which are currently your second and third place team. आ जाओ एक करके दी डिस्कॉर्ड तेरी भेड़ है jump up in first place is डिस्कॉर्ड because अच्छा मैच खेल रहा है most क्या of the teams on this page are not playing today, right? We don't have Regnum, we don't have Thunder Talk, we don't have Furia, we don't have Aurora. Magnum Carrier REC What's the rank of REC 6 बजे के मैच प्रीमियम है प्रीमियम लो ना बाबा insanely good. I'm expecting प्रीमियम लो भाई कितने भाई एक अबे तुम चैट तुम 160 रुपए नहीं लगा सकते प्रीमियम में भी ऐड आ रही है प्रीमियम में भी ऐड आ रहा है हाँ अरे वो बट स्प्लिट स्क्रीन हो जाता है मतलब आपका लाइव स्ट्रीम एक तरफ चलता है और ऐड एक तरफ 7 and Young Galacticos. Yeah, Group Red. We're talking about which team was the group. अबे पागल है क्या भाई मेरा प्रीमियम में कहां से एक ऐड नहीं आता Group Green definitely took ऑन that स्ट्रीम one मतलब when it स्ट्रीम comes एक to the साइड numbers. चलता है और ऐड एक अरे तरफ भाई Will we तो वो see प्रीमियम Alpha नहीं 7 not in अबे the प्रीमियम में नहीं finals is आता one of those big question marks I have because of what happened in PMGO, Max. Well, भाई एक बंदे ने पता है अभी तक 4 बार अकाउंट चेंज करके सेम चीज I think Alpha 7 is not going to qualify because there's so much weird stuff happening with this team. प्रीमियम में नहीं आता भाई Gameplay is nowhere किसी near कोई what भी we saw चीज at में PMGC last year. It's closer to what we saw at PMGO Season 1, which of course they were bottom 2 and didn't qualify to the finals after the group अभी stage. फिर आए But then they had Neyoo, right, playing instead of Carrier, and that in particular rang a few alarms in my mind, Hot Jukes, as to there's some weird stuff happening in the background that we're not aware of. And the fact they're changing a player as experienced as Carrier, the IGL, Premium for a new player. What the heck? I don't know if it's they're not taking this event that seriously and they're just messing about a little bit, but I don't know. I don't like what I'm seeing.
I am a little bit skeptical ताड़ोबा about गया the था mindset of this team शेर going into देखने PMMI. दिखा ही नहीं I पैसा don't think they have what it takes right now to be top ताड़ोबा 15, इधर है to ना be नागपुर brutally में honest. I don't know if you would agree with that. I'm being a bit harsh, शिवान but लेजेंड का गाना this लगाओ Alpha 7 धड़कन does वाला not look like the शिवहार 2025 शिवान Alpha गाना 7 गाता है ना we एकदम used to brutal love seeing play in these events. Yeah, I mean, it's definitely a night and day difference. Oh my God, that's for Master! sure. So something is going on with this squad. I hope that we can see them. यहाँ लाडले do डीले नहीं हो something सकता different. Yeah, इंटरनेशनल yesterday में was wild. everything We on saw pine them bro just, once again, starting off so slow, mistakes here and there. We even saw Carrillo like kind of drive out in the Mute open English. and just get shot, and On we were like, the kind of walls, like, yeah. what's the happening? premium Yeah, they level were sounding like, what was happening with them? English And casting then सुननी literally है the next game, मैं मूवी he's not देखूं even in there. He's not कोई even in the इंग्लिश match. वो भी So, तुम्हें हिंदी में देखना I'm not sure what's going on फिर पूछते internally. कि I gotta probably तरक्की send क्यों them a नहीं हो message रही to get a good देश आगे idea क्यों नहीं बढ़ because- रहा क्योंकि bro, Yeah, तुम I जैसे just लोगों को I सीखना want ही to नहीं see है them कुछ make something happen today. Shut all the haters I'm up. from Pakistan फिर समझ Like, सकता हूँ मेरे the भाई odds are से stacked against them because Yeah. I mean, we could तो ये definitely पहले see लिख some दो teams ना in Group Yellow be like, hey, you know what? We don't want to even think about Alpha 7 पाकिस्तान come से finals हो time. Let's see what we could do to put some pressure on them, यार especially in a map आप like एक के Rondo. लिए तो मैं Yeah, अलग से especially on a हिंदी map में like लगा Rondo, नहीं that's the सकता one you want to उर्दू try में है and ना get rid of them early on if you possibly can, because chances are we're going to know today if Alpha 7 But, will be making it to the finals or if they will have an opportunity to slip down in those और अब bottom slots बांग्लादेश on the rankings. बांग्लादेश और Looking पाकिस्तान at the वालों other में कुछ teams कर of नहीं Group Yellow, सकता because we talked about Alpha 7 for a bit there, so I'm going to pivot आपकी the दुनिया conversation के to something a bit बाकी more positive. देश कुछ नहीं कर पा रहे Nongshim हम Red मैं Force एक are स्ट्रीमर playing कहाँ today, से and कुछ Hot करूँ Jukes, I feel like this is the team that I feel like could be a dark horse for all of 2026. It's so easy, XEY, Tizzy, के and नाना especially नाना my के man, नाना परदादा Hyunbin, which सारे is गवार also थे my मैं कहाँ से सिखा MVP दूँ यार prediction for the entire tournament. They've had a great year so far, of course, in their home region. Is that going to translate properly on the global stage? It's a bit of a different conversation, right? But Nongshim Red Force, I would say if they bring the same caliber of macro gameplay and पापा तो गवार नहीं especially team है synergy पापा and को इंग्लिश communication आती we है saw back in Korea, boy, I feel like they don't have just a chance to reach the finals here, Hot Jukes. I feel like this is a team that could win the entire bloody thing. Yeah, absolutely, man. Human has been going crazy as of late. So, you know, I'm really expecting for them to come out strong. गडचिरोली I'm kind of trying to गडचिरोली में है ताड़ोबा Max, and trying to think. ताड़ोबा गडचिरोली Where do I feel that? अबे ताड़ोबा नागपुर के पास नहीं है We need John क्या Allen. पता Where is he? We need John Allen. John Allen. Looking at the numbers, ताड़ो considering that The again, fuck? folks, after tomorrow, top 15 go to the grand ताड़ोबा finals. Everybody else, अंधेरी ताड़ोबा when it जंगल comes क्या to है 15th place, I think you need 75 points. That's gonna be my guess. ताड़ोबा I think if you get अंधेरी टाइगर रिजर्व 75, I think ये you'll be safe in top 15. What do you think? You guys about accurate? Like for me to be safe, I would go like 90. You're safe. 75 is like. Oh yeah. Depending on do you have a point sponge at the top, etc. I get your idea. I feel like the Your cutoff views will on be Indian teams possibly for around, you know, your EWC 70, 75, maybe 80, देखते हैं यार depending अब on क्या how things खेलेंगे go down. मेरा So yeah, खाना I feel like कहाँ है that's a भाई? respectable भूख लग number रहा to है। go for. क्या करते हो It's म्यूटिंग hard to predict, right? Especially with the कभी मैच स्टार्ट होगा यार ये एग्जैक्ट 30 को स्टार्ट होता है क्या नैनो में से कभी मिला है तो नॉट रियली नॉट इन रियल लाइफ आई डोंट नो बट बातें तो सुनते ही है ऐसे वैसे कम्युनिटी में ऐसा इन पर्सन तो कभी नहीं मिला सो आई डोंट नो क्या रे करो ना स्टार्ट तामिनी घाट देखा है क्या नहीं यार मैं इतना घूमा नहीं हूँ मतलब तो मेरे को पता नहीं अरे भाई आमिर भाई मत स्पैम करो वन टीम दैट यू सपोर्ट इन PMMI एंड वर्ल्ड कप देखो बट इंटरनेशनल वाइज तो मैं अरोरा को ही सपोर्ट करता हूँ अगर आप मेरे को पूछो या WBG क्योंकि एक में सुक है और एक में टॉप है और दोनों बहुत टाइम से बहुत डोमिनेट कर रहे बट कभी वो ट्रॉफी जीत नहीं पाए तो मेरे को चाहिए कि वो And दोनों I में feel से it's कोई going to एक be the बार कोई exact same जीते thing here with Group Yellow coming into the fray. कुछ ये Where legit कोई if a एक जीते team gets a dominant position, they're not losing it. They really are. I mean, maybe we may see उन्होंने a मैच नहीं crazy last-second Silas type play, right, where he's able to have a comeback. But they're putting some crazy points on the board. I mean, a big Face note cam off is, कर रहा is हूँ तो S2G, बस right? When they खाना got खा that high ground in Erangel on military. बस Once they got that spot, फटाफट they won that game. So I completely agree with you. Alpha 7, Yangon Galacticos, to have a solid opportunity of catching up, I think the pressure is on them
100% in Rondo. Yeah. Rondo is going to be that match. where Rondo, they need to put up Rondo. 20 points to just feel okay. And if they don't do that, like if we see Alpha 7 or Young Galacticos go out early with like 2 or 3 points, yeah, I'm losing all hope. Yeah, honestly. I was reading the comments yesterday. Once the stream ended, I was just looking out of interest, and people were like, Alpha 7 and Yangon Galacticos are frauds. I was like, okay, that's a bit... we're kind of taking it to an extra level right now with that trash talk, but I'm like, if they want to put all those discussions to sleep, they need to show up today. As you said, right, just get 20 points, get yourself a 30, 40 point day. That should be enough to push you up there, but right now, it's just not been it. You know what? Damn, we went back to being very negative again. I don't... Well, we kind of have to be, right? Because they have to make it. I mean, they really do. I mean, when it comes to PMGO, Alpha 7 didn't even make it to the finals, and the look on their faces were just shell-shocked. And I talked to them, and they were like, we got too overconfident, and we just didn't prepare for this one. This was the first tournament we didn't really prep for. And they pitfalled, right? Yeah. So I was hoping that would be the last one. I'm not saying that they did that here. I think that they definitely put in their homework. But after watching yesterday, something's wrong. Just something's wrong, and I just can't quite put my finger on it. Something ain't right. But you know what? I do have a question for you. Do you know who was the true MVP of yesterday? Oh, the true MVP. Yeah. It's a trick question. There's no real answer because I have the answer, and it's the P90. In the hands of Ziol. You're right. Popped off, destroyed who was it, Yangon Galacticos, then he got himself a few extra eliminations on the side in that Miramar game, and then in the hands of Silas, he gets the clutch versus all of Bigatron, and especially gets that great nade after. But man, the P90 against Wolves too. Yeah, right? I mean the in that Miramar game, and then in the hands of Silas, he gets the clutch versus all of Bigatron, and especially gets. खाना खाते खाते क्या देखे यार क्या देखे what should we watch what should we watch ब्लॉग देखते हैं ओए मैया भाई ये मैं नहीं कर सकता पता है ये जो मेरी पट्टी है मतलब इंडिया में सेफ नहीं है भाई मैंने सुना है बहुत लोग का हो जाता है भाई ये व्यू देखो तो राणे की फट गई है वन से नेपाल गए What? नेपाल गए थे नेपाल जाना है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भाई के इस और एक व्लॉग में। अब हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर पे कुशमा करके एक जगह है, वहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे है दुनिया का इसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा, मैं बस खाना खा रहा हूँ। टॉप बंजी जंपिंग जोन। मैं अपने डर का सामना करने वाला हूँ। बंजी जंपिंग तो करेंगे ही करेंगे, बंजी जंपिंग के बाद भी एक दो एडवेंचर मैंने इधर उधर देखे हुए हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की। होदे राडा पिच पिल्ली पिल्ली पाड़ा। वैसे हमारा सफ़र चालू हो चुका है और पीछे आप देख रहे हो यह हमारा हॉल्ट है, मतलब हमने तकरीबन 1 घंटे का सफ़र कर लिया है। यहाँ से अभी 20 या 22 किलोमीटर कुछ तो बचा है। तो राणे को वाई वाई खाने की इच्छा होगी, तो वाई वाई क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन वही वो मैगी मिक्स करके, ऐसा नहीं कि अपने यहाँ पे भेड़ बनती है ना, वैसे यहाँ पे एक तरीके का वाई वाई है, तो वो खाते हैं। तो जो मिलेगा वो इतना ही। यार यहाँ पे खाने का ऐसा विषय है ना कि मुझे तो शिसारी आ रही है यार। मुझे ना ऐसा लग रहा है कब जाके मैं अपने इलाके में घुस के वड़ा पाव खाऊं, मिसल पाव खाऊं यार, ये मुझे पसंद है यार। ये इधर का खाना है ना, निस्तेज है यार, अजीब है। एक तो उस दिन मैंने जो
It's Suk, 33Z, Suki, Bay, and Jin N. I believe Jin N is going to be the sub going into this one, unless they go for a little interesting rotation like Alpha 7. We'll have to see. But Weibo still have not only their regional dominance in PL in China, but also so much international exposure, especially for Suk. Man has been playing globals since like 2020. So if any team from China can bring the heat today, it will be Weibo Gaming, Hot Jukes. Well, let's see if they're going to be able to do it as Let's go, locked in for match number 1. It's Rondo, the big map, to get some serious points on the board and hopefully give you that golden ticket to the finals. We got a singular playing path here going right down the middle, so we're going to definitely see स्टार्ट हो गया। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? them hot D+ drops है? ring out D+ very है? quickly D+ here, man. Yeah, I mean, Test Track is going to be up there, D+ Yulin too, and Danching is going to be available for these teams. Usually those are the three main drop Saishe, locations. At D+ least that was the का case Nolbu, between Saishe, Group Red and Group Green. Fabian. Now it's going to be Group Red D+ versus का Group team Yellow. change नहीं हुआ ना, Oh, किसका you're going team to see change as हुआ था? many hot drops, especially Yulin. That was happening. I think it was like, what, a 15-20 minute hot drop, right, Hot Jukes yesterday, because of the circle combined with the playing path, and everyone was just staying there for as long as they possibly could. BTR ended up getting a bunch of eliminations there, followed up by also Thunder Talk. Let's see who's going to be sending it there this time around, and it seems like S2G in particular will be looking to get possibly involved into that one. Well, no, they're going to go for the stretch, making it over to Stadium itself. But yeah, Test Track is getting busy, Dancing getting busy, and especially Yulin. Going to get especially busy here, Hot Jukes. And look at this, Alpha 7 losing the fight off the rip to D+ Kia. Finding those weapons early on, and man, did they get lucky. Wow. AUG AK off the rip. That's what you like to see. Revel gonna hold it down for his squad. Trying to find some angles for his team. Ooh, Yangon. Obscure. Ooh. That's huge. Okay, oh no, this is massive. They're just squad wiped LGD. That's massive. Influence Rage. So the Wolves are getting active as well. This is always in Neox Factory. And we could even see S2G getting active with Enigma Galaxy. Pressure starting to read up. Yeah, here you're going to be having Yulin, Noctrum Red Force. You've got the Wolves moving about on the northern edge. Yangon Galacticos, Chiamba. But this fight, definitely a bit slower than we had last time. Yeah, for sure. I mean, one thing we saw was like GOAT didn't even get into this at all. Like GOAT stretched all by their lonesome. And they say we want 0 hot drop action. That's really interesting for me because, I mean, I think the meta by far is going 3-1. Just trying to put some points on the board early on. अबे स्पैम मत करो भाई क्या अबे Did you get इतना the ही है name? भाई Oh, we saw it coming. ये देख Yeah. ये देख Avoiding it. लल्ला मेरे लल्ला Oh, that's counter-nade. Ooh, got him. Nicely done, Weiji. Gets on some Master Smile, trying to send it forward if he can. And flush it out. But yeah, Yangon had a good start. Lol, watching after joining Epic. Well. They do have a recall और Oh, अच्छा करे. which is going to be Mernet. He's 2 crore की watching the edge of Jiaotin, so don't worry. We'll see way more of Myanmar this game, though. Back in the side of Neox is going to be Baton. Hitting the shot onto Revo, the man himself. And that's going to be NA getting the win. And Necessary in particular, right? Getting so many good clutches yesterday. And here, alongside Baton, getting the squad wiped onto A7 in Neox. Again, for Brazil, this is not looking too good. They could not afford to take an L this early on in today's matches. Yeah, और तरक्की करे 2 करोड़ की watching भी आए भाई Remember, we're going to see Group बढ़िया Yellow only play 6 games so far. जैसे मैंने new player लिया So you can't really trust the leaderboards, right? If we see a team that's sitting in second, third place, it's not going to be 100% accurate considering that all the squads haven't played the same amount of matches. So if you're Group Red player and you're sitting in, 4th or 5th, you still don't want to feel too comfortable. तेरा मैरिज कब होगा लल्ला अभी 26 साल का हूं 90 point mark minimum. I agree. Yunbin, that's your man right there. Your 4 boy. साल भी भूल जाएगा. Gotta be careful. Putting in work. Hyunbin will always do some work. Some good work, too. I don't know why I took the very deep voice. I always feel like I have to set up Hyunbin properly. Nolbu, though! The Korean super player just gets it done on North America. The Wolves taken on down. Not the way to kick it off here. Nolbu is not a player you want to underestimate. As now he's looking for the 1v3 clutch, possibly. The nade's looking decent. He drops on down, avoids the incoming damage from Elementrix. He's going to go for the drop shot, but Nolbu sees it, trying to stick that res and heal up fully. Good movement here, be able to avoid it. Gets the first aid on himself up to 75% HP. Nolbu, the movement tech is up there. Goes with a shotgun. Can he get the 1v3? So many not connecting, and he does get it. Nolbu 1v3 against North America. D+ Kia meaning business in Neox Factory.
Nobu not messing around. अबे ऐसे जानवर भर रखते हैं वहां पे. Gorgeous. Finding that right hand priority, just non-stop action. Nobu. Wow. कहाँ That's all I से? can say. Wow. मुझे डर लग रहा है voice वहाँ. on that. I was not expecting a 1v3 literally in the first 5 minutes. That was so quick, but it's Normal, man. Literally, if you guys do not know about the legend Normal, in my opinion, he's one of the best players when it comes to movement tech. The way he maneuvers through any fight is just exceptional. And I feel like if you give this man any CQC weapon in particular, the S12K, this is the man that has the highest chance of winning 1v4s in the world, in my opinion. If he has the perfect setup, and, he proved it here, getting a perfect 1v3 onto Wolves. Normal, never to be underestimated. Oh, that was just disgusting. I mean, he even pulled the pin. He fake pulled the pin just to kind of get him that audio cue to think that he was actually holding the nade. Swaps back to the shotgun, tricking him, and so that way he could get that right-hand priority, whipping it so that way he has no, like, Elementrix had no way to even shoot him. Yeah. So, I mean, Nolbu, just picture perfection play right there. Yeah, I mean, it's also not just that. There's also a few little things. He saw the nade coming his way. He didn't have time to stick the heal and get up to 75% HP. So he drops down, says it's fine, I can take the extra full damage to reposition to avoid the incoming nade damage. He does it. All of that in like the matter of 5 seconds. The speed at which he made that decision was just mind-boggling. So Nolbu, whew, oh my word. Yeah. The man is looking insane. Yeah, who needs to heal if you can't get shot? Yeah, you know fair enough. Yeah. Oh, okay. Arena though. Right onto the Turkish team in the top 2 right now. They don't want to go out. They want to try and catch up to the big boys in number 1. And actually, why I said that, they are number 1 right now. They've got 4 eliminations, but that's going to be the win. E-Arena, though, getting a little bit over-aggressive and getting punished by S2G. Ah, getting some nice shots as well. Beautiful thirst. And that's S2G, yeah, coming out on top of the arena, up some points. They had a great day. And now it's all about just continuing that dominance and just locking in that position here. Most definitely. Oh, Nade gonna get cooked up. Ooh, doesn't take the damage. Gonna get surrounded here. Yep, trying to get the angle with the orb. But this is going to be an easy wipe. Send it all together. There's no way you get clutched up. He does have an S12 case. You definitely got to respect it. And they're getting third party by a team from a distance. So you've got to be cautious here. And it's going to be RRQ looking to get involved in that elimination feed. But Tony K will get kicked off and eliminated. 7 points already headed the way of S2G. You know Barish G is going to love this one for his squad. Yes, he is indeed. It's the RRQ. अब इनका मेटा वेटा नहीं होता भाई really need to दो go हाथ में दो today. इनका ये देखो Let's see what they can do. So मिनी far, चला no रहा है eliminations. Just keeping an eye out. इंडिया में Trying to अरे play नहीं things a जब little तक मेरे bit को slow एक्चुअल के here. नहीं They मिलेगी wanna मैं नहीं extend निकल that रहा late- रोटेशन to के that लिए late game. Everybody's centered up. ये लोग except for कुछ भी Alpha लेके 7. खेलते हैं Yeah. Let's see where this next zone's gonna pop. Yeah, by the way, I feel like a lot of people might be तुमने confused मेरा as to why DPS E-Arena रख sent दिया on to S2G. मेरे को They पहले just मेरा wanted to use their DPS recalls. चाहिए They're like, yeah, we'll just take a random fight. We got ये play देखो, ready to ये recall. देखो, Why the hell ये not? देखो। RRQ, maybe looking to do something similar. देखो। Onto S2G, gets Nice the shot shots. right below the ये देखो। 2-seater. That's a good one for Lepar, getting those 2 eliminations. Oh, it tickles the toes. He gets the points. Good to see that. RQ really also a team that needs to get a big comeback, I would say, if they want to look comfortable, because they got 30 points so far. तुम देखो ना यहाँ पे On the overall क्या क्या चल rankings. रहा है But मिनी keep in mind, this is their last day, so UMP whatever they have close range में today, that is all the फर्क points ही they नहीं have पड़ता for the जो करने entirety मैच of उससे the मारो event. So they need to make But sure they लूटो get a rotation good दो performance in today's 6 games. That is correct. Let's take a look here as KSG hitting the laydown. Bamboo. Using some of that ये तो terraforming. डालेगा We लग saw रहा है that हलक तक डालेगा yesterday, bamboo and we're going to continue to see that today. Ulf was a nice nade, Ooh. peppering the side of ये तो हलक KSG. तक डालेगा भाई बम्बू अपना Looking to get that initial देगा knock लग रहा है ये to possibly go a push. We are बम्बू ही seeing गाड़ेगा Revel getting knocked ओ ये टीम भी by बहुत अच्छी है LGD in the यूएलएफ feed. अबे साहब तो अच्छी है That is outside of the कभी play भी कोई zone भी here. मार देता था That'd be an interesting fight to watch. Look at that catch. Explosive blow action once again. Yeah, you got to be very careful. The explosive bow is very specific, where you need to use it away from big landmarks like rocks and trees, because otherwise it doesn't work. You got to do it in very open area. So, और ज्यादा यूज हो रही है it does take a अबे देखो moment टू to get बी used to and ऑनेस्ट know तुम what सोचोगे ये ज्यादा is यूज हो रही है वो ज्यादा terraformable ऐसे and what यूज isn't. कुछ ज्यादा होता नहीं है इनको And I जो feel like मिलता है in ना North East, you just gotta ये know वो लेके exactly खेलते which हैं हाँ area ऑक is स्प्रे के लिए usable. ज्यादा As यूज Jan हो रही है टू बी ऑनेस्ट looking to get देखो Mau Mau इनको back कैसा up on रहता his 2 है feet.
good to say उतरे the homie. इनका एक As they टाइम are रहता है holding off ठीक Alpha है 7, जोन they के did हिसाब get rid से of ये Revo, खेलते हैं and Revo did already get उतरे recruited. So अगर that उतरे means टाइम में here, लूट Hotchkiss मिली तो Revo मिली is नहीं eliminated मिली for that game जो for the है वो entirety लेके खेलो of this Rondo ऐसा match. नहीं कि ये And that is a अपना player that you just जो प्लान है वो don't want to जेपरडाइज lose कर out देते this early on. That is a कि big L again, headed नहीं the way भाई of Alpha 7. अब लूट नहीं मिली तो और थोड़ा देर लूट लेते हैं S12 के DPS लेके ही जाएंगे ऐसा नहीं Gonna have रहता trouble even getting into this जो है next मांगा zone. बड़ा They're gonna have होता to find a spot here because हल्ला almost बोल everything's taken already. But Alpha 7 are known to be able to, for that edge style play, they can definitely do something, but they're gonna have to do it with 3 players up. It's good that we do see Carrillo playing today. That was Carrillo यार PMGC चैंपियन है भाई He is playing right now, which is 16th nice. कैसे But, चल रहा है yeah, I wonder why he had to leave भाई for one that of last the game and let Nuths play best that one of final the best Milan. agency है भाई Maybe they और just want to legend get है भाई Carrillo अगर आपको the पता है game and just give him a little bit more 2019 experience. से वो But जब मैं खेलता था अपन खेलते थे not a fan. Not in a तब भी tournament where Carrillo it's almost खेलता था $500,000 तब भी prize से pool, अब भी wouldn't recommend it. और डोमिनेट वो भी Yeah, करते wouldn't हुए आए हैं recommend it ऐसा नहीं कि either. सिर्फ So, actually, Yangon सर्वाइव Galacticos, किया I है love their rotation here. They're trying to go जीतता है for अपने double peak west रीजन of में हर Stadium साल compound. जीतता है हर It's gonna be टूर्नामेंट a जीतता है हर strong ऑफिशियल location to have, just a good scope of the land and see where teams are locating and how they're going to be rotating around the battlegrounds. But so far, otherwise, By the most way- teams in a circle. Now, I feel like we reached a truce where everyone is just going to be relaxing until that big circle 3 shift is going to dictate what fights need to happen. आया तो Yeah, it's like once those आया recall तो कौन सा towers start going out the प्लेयर window. ये तो all of a पहले sudden नावी it's थे like, क्या "Alright, guys, गोट slow वाले things down a पहले little नावी bit, थे slow things down." Another team that came टीम in का नाम भी today गोट that I रख didn't really दिया get a भाई chance to सीधे talk about, right, is Enigma Galaxy, right? I talked to Ralph during PMGO, Ralph, and I was like, Ralph, on a scale of 1 to 10, how much is it Coops' fault for not being here? And he just said, 10. You know, like 10, 100%. Coops is back, so I'm really excited to see what they do here today. The Wolves, though, getting shot up and peppered. That is Baton Loops taken Esports. out. Well, I think that was stolen by हाँ लूप्स KSG. पैदा कर रही है फेडरल के साथ Meanwhile, Slownick, Tianba running over. What is going on? अरे 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 Tianba पंप चालू है fighting भाई it out, and it looks like Tianba getting the better of them. Yeah, I mean, the main carry of Wolves is already out, right? It's necessary. He's just not going to be in the picture anymore. Trying to survive as a solo. He's going to be elementary. चाइना की एलजीडी टियानबा डब्ल्यूबीजी केएसजी 4 टीम चाइना की खेल रही है भाई ये वाले मैच He's में just pincered between the likes of RRQ, this Tiamba right behind them. This is definitely not going to be a high point Rondo game for them. But actually, you were talking about Enigma Galaxy. They did not have Lord here. Lord was not able to travel for this event, meaning Novalo is here. So it seems like they just can't have the main 4 players on Enigma Galaxy. It's just, No matter what, it's just not happening. There's a curse happening for this यार तो मत team. बोलो यार let them go let them see मेरे को पावर को इंटरनेशनल्स में देखना था First team out here after कि how he performs one of those things that gets इतना मैं बोल सकता हूँ getting peppered up as well. Oh, कि Wolf are gone. individually Yeah, there you power go. KSG taking out Wolf. So they're gonna अच्छा go कर to लेगा the lobby individually with I only don't know 3 about the whole points. team But man, we are कि as seeing whole the team में लोग कैसा light खेलेंगे up here, Max. but individually It is. We are power getting अच्छा to that खेलेगा breaking point of the game. अपने Both 1v1 though, I'm सो not too निकाल scared लेगा again. Very slow burner team. Starts slow, starts to build up a bit more confidence and momentum as the tournament goes on. So I feel like Turkey will be completely fine moving into the next games or days if they do make in the top 15. But so far, looking at this circle where teams have to locate, you got some good spots. अच्छा भाई but in old particular, TSM Unit is entity still in reunion play, and that is going to be block held down by Nongsham Red Force. I'm looking at the map. There's no teams in a 500-meter surface area around them. So Nongsham Red Force, I would say, off the back of that circle, top 8 should be very easy for that South Korean team. अबे 5k लाइक अबे 10k लाइक्स करो बे चैट लाइक करो यार लाइक कोई होता नहीं है away from double peak next लाइक to करो stadium. 10k लाइक्स Encounter the Tide team. It's साला the मेरे को arena. लोग सारे Will देखते they हैं be बट willing लाइक to take the बहुत fight कम as करते Master हैं लाइक Smile करो does get knocked? 10k लाइक्स तो हो जाने चाहिए अंडी बाटी साठी जो लाइक नहीं किया Keep an eye out in the blue zone, putting a little bit of pressure on the Young Galacticos. Team that really needs points here. एक साथ चैट एक साथ 10 साल लाइक्स Tianba and RRQ are in that same boat. And we But know good thing for AQP Tianba पर and कुछ RRQ, they are dead EWC center of में this circle. You could see. हाँ? So this could be a really good chance for them to possibly lock in that trip to the finals here. And they do get zone as well. Let's see how they're able to capitalize. Meanwhile, say Cloud, gonna have to make a play here against E-Arena. Nade is starting to ring out towards his direction. Ooh, does pepper him up a little bit. That's going to put him on notice, but I think Turning push करेंगे yeah, going to go ये ahead push and क्यों नहीं leave कर and रहे try to find another angle. Yeah, E-Arena
probably need to focus on trying to get into this next circle before this fight. Yeah, if you want to try and leapfrog them and hold them off after while being in the play zone, as you said, that would be the best way to do it for you. You know what? You are finding sort of some knocks on Yangon. They are struggling. Yangon Galactico. Focus on your repositioning in the circle itself. Joker does get himself some good damage. पता नहीं यार मेरे को ऐसा लगता है पता है जो सीजन में ये YG जीती थी ना क्या Yangon Galactico soon enough, and it does indeed. That's it for Say Cloud. पता नहीं उनका लक बहुत चला था भाई लोग एच गेम प्ले उनका उन पे एच पे बहुत ज्यादा हार्ड शिफ्ट आ रहा था and the only minutes remaining right now, he's going for a big Eastern rotation, and as I say that, is just not working out, and that's eliminated, remaining in that 15th position that we know, Hot Jukes, is the cutoff to reach the finals. Yeah, and it's so crazy how just one knock can mean just doom for your team. I really think the arena was trying to dip there, but once Romeo got knocked, they're like, you know what? Let's get these points. And they turned around and were able to take him out. So, yeah, Yangon Galacticos, they are sitting at 15th, but that is not the true 15th, folks, considering that they played 6 games yesterday, and we have 8 squads that this is their first match. Meanwhile, GOAT, this is their first day today, as well as Influence Rage. I want to see what the incredible Brazilian team is going to do. Got a little boy there, up close and personal. Ooh, focus. Can he discern where this nade should go? Let's see. You got to be careful. This is a very nadeable area too on that bridge if Influence Rage can get a little bit closer. So just make sure you zone them away. If you demand that respect, that position remains playable. Keep respect. Yeah, you want to keep Federal in check. There's a guy you don't want to let loose on Battleground, or he'll just do some crazy plays on you. Maybe pull up a clutch. If he does it right. That's Ayato, just waiting for the smokes to dissipate before hitting those nades. He does have 3 nades in hand. Ayato, if you guys did watch PMGO ECA, insane with that utility accuracy. I come back at least scrims to that needle so many times. Back to back. As Mark C also going for wide Eastern rotation, trying to get an off angle onto Influence Rage. I do like the idea, but you got to be careful. S2G is there lingering, waiting to have an opportunity to strike. So, just show his back for a second, that could go terribly wrong very quickly. A little bit of a stalemate right now. GOAT and Influence Rage kind of just sharing this location. They're trying to pepper each other, maybe get that crucial initial knock. Fight doesn't have to ring out just yet, though. Luranzin, bro. Zone, if it does, S2G Brazil World Cup पे तो dominate कर रही है क्या इधर भी करेगी? And then GOAT will have to make that push. साला Brazilian blood अलग ही है रे. Or they could even wrap around. But we'll see how this. Brazil में बहुत talented लोग हैं sports को लेके chat. Trying to buy some time. Yeah, just trying to really delay as much as possible because the circle is just not favoring GOAT team. So they need to do a move eventually with a Rondo force dipping in the blue a little bit. It's just a little bit of damage, so he's fine. Back it up. To take it. Yunmin किधर है? Is gonna start to encroach on so many extra spots on this Rondo game. Circle shifting up. Nongshim Red Force having a bad. अबे Nongshim into LGD down southwest, and the circle will go down south again. Tiamba, RQ, Weibo looking exceptionally set up for this potential chicken dinner. So they're going to be having an absolute field day here on Rondo. But LGD now, they have to get on the move quickly. And Nongshim Red Force, they see this circle. Hell nah, this is not worth it. We're going to get the hell out of dodge because we can get in the circle for free. While LGD have to go for pretty big rotation. Beautifully done right there. LGD you got to prioritize zone always. And we're seeing that feed light up. Big Galaxy getting knocked. Tag join करोगे क्या? Last 2 players of Alpha 7 are trying to make something happen. They are not in this next circle though. So they're going to have to win kind of a crazy fight if they want to continue to put points in this game for their squad. You can see LGD. Yeah, just right now, just still trying to get the lay of the land. This zone is going to start closing. And that does not look like the right direction to go. That's for sure. TAG join towards the arena. Even though they're not in the zone, you just got to hold them off. Really, just don't send out the blue. I would not recommend it to my worst enemy. That's going to be focused, taken out of the picture by HashtG himself. It's going to be S2G looking to get himself a double-digit elimination game, right? They were up to, 50 before this game? They're up to 8 so far. They are loving it. The Turkish team is having a great time as Mormon getting shot by Ling S and Tian. Pull up in the Lamborghini. A second knock. Pull up in the Thailand not having a great time as they're looking at Gilio. Gemfoss, he's just going to be fully surrounded, but it seems like they're stuck there with him. Will connect eventually. Loranzin barely surviving the encounter and might get a full reset. But RQ, where's the backup on that position? Unfortunately, there was just nothing there to help him as a solo split player. 1v3, man. You know, he wished he had the P90. He would have probably ended up winning that whole thing, but
running out of ammunition. And looking on the other side, this is still outside of the play zone. LGD losing their vehicles. That's going to be really, really tough. Yeah, Look at ये Neyoo सही में Galaxy though. 5 eliminations so अबे far. Not a भाई bad एक ही बंदे ने start, दोनों but को that's पेल दिया Alpha भाई 7 एक ही बंदे ने eliminated. No एक ही placement बंदे points. ने पेला है No और placement हागा points. A7 ने धप Brutal. धप 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 They even dropped below Yangon Galacticos, right? Oh my goodness, Alpha 7 falling from grace. Things are not working out at all for the Brazilian team. Though Enigma Galaxy, a decent game. 5 eliminations for their first match. Coops gets 2 also for the side of Ado. Could be Reservoir inside of that shed. He just want to demand a bit of respect and not allow LGD to get in grenade range, but Tiani can भाई see him. तुमने आवाज सुना तो घप 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 कितना हागा वो लोगों ने Just put it back वो in एक the बंदे पे backpack. Not going to commit to it just क्या नाम yet. था Maybe Scoops waiting पे for some smokes to dissipate to get full information, or maybe try and leapfrog it, which is exactly what Mao Mao is doing. You can see on the mini-map, trying to get slightly more ahead of Enigma Galaxy, and also trying to get a better position in the play zone. Ooh, As Moxie. RQ, Oh, nading Moxie Moxie. getting eliminated. Yeah, he's done. ये अनबा का पोजी देखो Yeah. Narpeco जनबा making it happen there for सेंटर his के पास squad. स्प्लिट देखो एक So बारी yeah, RQ doing that कितना 3-1 प्यारा है सब split. लोगों ने एक एक Could have घर पकड़ been एक great एक if we saw that single player कवर get पकड़ that के रखा है squad wipe on the influence rage. But they still have 3 players up, and they have a good solid position. So RRQ, we talked about how badly they needed to put किधर points है up hardship here into this first match. नॉन्गशिप and का they're बहुत looking अच्छा poised to do so, है especially if they अब continue आई to डोंट get नो blessed ओपन with the फील्ड है तो circle. फिर जीजी हो Let's see जाएगा where the अगर क्या zone's ओपन gonna फील्ड है तो go. You got Weibo down there on टीएन the में तो बहुत अच्छी southwestern पोजीशन है side. ओ And वीवो के लौड़े RQ, लगे Tianba are going to be in this next circle. Those are 2 teams, Max, that desperately need points. Can they capitalize on it, though? WBD को That pull is up करना going to पड़ेगा be the question. When you get a zone like this, you can't just win it. You need double-digit elimination points. They really got to start turning up the aggression. We need to see some big moves right here, right now. But I'm going to say this is not Rondo anymore. This is cover flare map, okay? You need as many cover flares. It's such an तुम लेजिट देख रहे हो कि इन लोग के Also, इसमें if you कितना wanna use an explosive कवर है boat भाई server to इनको create भेजो some इतनी dip, that's यूटिलिटीज also a valid मिलते option. कहाँ Cover से flares are going to be your तो bread ये जानना and अरे butter बोल in such सही an होता है open-ended finish. Hyunbin knocked down from a distance. Really good roof angle from 33Z on Weibo. Able to give himself a good scope of the land. See what's happening. इनको इतने कहाँ से यूटिलिटीज Will मिलते they हैं चैट attempt and save him? In that position, I would say it would be a bit risky, but if they are quick on that move, they could do it. They still got 2 minutes and a half before the circle closes up around them. So Nongshim, whatever play you do, you got to be quick because your position is so far away from the playable area. Well, they got 0 seconds now. Hyunbin is eliminated, but they're वेस्ट going नहीं to start करते moving. ओ हाँ Trying to find a better position. That's not it, though. MVM with the wide open shots. They're going to make sure that they take them out 100%. They are stuck in the open, and they are out of there just like that. Tough one. I wish they maybe tried to go for a crash onto Weibo, because here trying to push in the open, you got look at all the off angles. Any rock, any tree, any kind of cover you have is just not playable because there's so many teams just looking in your overall direction. That is it. Taken on out for almost all of the players. Only XEY remains over there. Things are not looking too good for them at the very start of their group. As LGD though, they've been really tested so often in this game, right, Hotchukes? From the edge, circle not being kind to them every single shift, but here's 7 eliminations, still have a 3-man team going strong. They're looking decent. They definitely Enigma Galaxy है क्या? Enigma Galaxy getting popped out the vehicle as well. LGD peppered up. There goes Tian. LGD ने वो 2 किल लेने के चक्कर में अपने He should be able to get res though in this position. Oh, maybe not. Yeah, Weibo having an angle there, putting that pressure. RRQ, we talked about them. Can they make something happen here? They are both within nade range of D plus Kia. This use of utility is going to be so crucial for them. Yeah. D plus though have their eyes on so many different squads. They got a lot of angles from this position that could be good for RRQ here. अबे नहीं रे WBD को got a nice setup. देख रखा था WBD 1 nade था could spell disaster. Beautiful cover flares coming out from D+, by the way. Really good. It just helps them jump from spot to Su spot. कभी अलग से make ना it मर closer जाए to the बे play zone and especially closer to the main competition of RRQ on the east. Weibo also were able to successfully exit from their compound. So far, still got 4 players up, but they've got to be careful because they were in the compound. They didn't have too much information of where maybe a few of these solo stragglers are, such as Satan, for example. They know someone might be there, so they're just checking it out with a bit of ये तो हमारे जैसे नेट्स डाल रहे भाई random. If they're not careful, that could be an insta punish. As with the Roadster sending it forward, he's taking some damage, and it's going to be 33 to snuff him out. Satan and Enigma Galaxy eliminated will not be making it to the top 8. They will not.
दिख गया Looking इसको, at सुक को दिख गया। Weibo though, 5 eliminations, इनको full टियनबा squad को up, मारना पड़ा। ये तो जोन back में है, against the wall. This is where they love ये तो to जोन में be. है, सुक तो They're जोन in a में है। solid position सुक here. जीतना RRQ, चाहिए they यार, are मुझे dead तो ही center, सुख but that is मिलेगा। not a center. I think you, well, they were dead center. Now Not with anymore. the zone बेचारा shifting, हर बार yeah, अच्छा they are खेलता on है। the edge, and they are going to have to defend that against D plus Kia because that is the only place D plus could really go. Let's see if they're able to hold them वो off. साल निकाल दिया डीके ने। They're going to try and leapfrog a little bit here with their वो साल निकल गया कि वो साल 5th player है। Fabian on the back end. Got to be careful. Guys, to not 10,000 show likes that होना too चाहिए। much. 6.5K की You've watching got घंटी all मैंने जो these subscribe teams नहीं around किया। you. If you're RRQ, you got Tiamba, Influence Rage, and especially bam, Plus right bam, behind bam, you. 10,000 likes and Any subscribe misstep तो होगा मेरी could channel spell जो भी absolute हो disaster न्यू for मेरी you. स्ट्रीम पे Oh, सब्सक्राइब और ये लाइक oh man, Arena looking really good on the sprays today. Though. They're looking होना crazy चाहिए। good. They're locked in, that's for sure. They're locked in, bro. Yeah, they're 8 locked in. eliminations so far, 2 players up, but that's a great start for them, especially considering this is their first match of this tournament. Weibo, Souk getting knocked there. No problem. Should be able to get picked up. Meanwhile, D+, yeah, just RRQ getting peppered from so many different angles, not really able to make it work. अरे S2G आ गए। अरे भाई यार Getting taken out by S2G. मार दिया Gonna work out big time for the side of RRQ. Let's see if he's able to steal some of these eliminations. He needs every point he can possibly get. He gets one. Nolbu प्योर। Meanwhile, shotgun from Nobu. Too deadly. That was a little bit stressful there. Hamsiji almost ruining the entire late game finish of D plus Kia, but luckily enough, Fabian saves it. And they do find Fear and eventually. कहाँ से हम मारेंगे इन जानवरों को, इन दानवों को? Eastern edge of the circle is held down by ये the दानव trio लोगों of को D हम plus कैसे Kia. मारेंगे Got himself that knocks player back up. So there's still a chance, but right now it's looking, again, insane for China. China has shown up so strongly today, Hot Jukes, with Weibo and Tiamba getting a top 5 together. Can they convert it, though, in an actual chicken dinner? That will be the question, as Mormon, suffering the brunt edge of the damage from both Weibo and Influence Rage, will get flushed out. It's down to a solo. It's Turney K. Can he survive? Can he reach that top 3 podium? It's going to be difficult because there's still quite a few teams remaining. There's still 5 WBG को squads टियनबा को here. देना ही पड़ेगा। And he holds on all by himself. पूरा He is डब्बा डाला। outside of this circle. Going to have to find a way into it. As this is the last zone, folks. The circle ain't closing anymore after this until it goes to all the way to the center. देखो कितना फास्ट रिपोजी कर रहा है इसे, देखा कितना फास्ट रिपोजी right behind him. Also Tianba, we haven't been talking about like crazy. They still have 3 बट ये players जोन up. जा सकता है They're one अगर of ये those लेट teams that was और in भी that भाई hot seat इन्फ्लुएंस coming रेज का into चिकन है today. आई गेस मेरे को लग रहा है This इन्फ्लुएंस could be a रेज का huge चिकन है game for them. बट डी Could प्लस be, के definitely could भी be. 3 By the way, बंदे हैं, Group इन्फ्लुएंस Yellow रेज in के this भी 3 game, बंदे Influence Rage, टियनबा the Arena still there. और WBG जोन So के are बाहर है। Weibo. So a lot of teams of Group Yellow making it in this first top 5 of the day. Pull up in the Lamborghini. For the big push here, Optics is right onto Tiamba. Weibo popping out the vehicle. 33Z getting the shotgun. A risky play, but not working out. Sometimes you got to take that gamble, though, especially when it's your first day. They can afford it. Tianba couldn't, and they capitalized. 9 eliminations for Tianba. That's one more team down, 4 squads remaining. Did they not try and cook nades before sending it to? Like, that was But such a weird way to send it forward. But, okay, that means because there's no team behind Tiamba anymore, they can play this rock in full effect. ये क्या था ये तो भाई They didn't lose a single player, by the way. They didn't ये देख के मेरे को इंडियन लॉबी की फील आ गई from that Weibo push, so the execution was just not it. It was not working out. So out of the 2 Chinese teams, Tiamba will be the one standing tall. D Plus again, great cover flares, able to loot up all of the crates of RRQ and set up a pretty successful defense. This is stage 8. The center is going to be shifting mainly on top of Federal of Influence Rage. But when you're surrounded by so many teams, a solo from E Arena, almost a full team of Tiamba and of D Plus, can Federal survive it to get that Brazilian chicken dinner? It's not going to be an easy one, but he could make it happen. Look at that arm from all the way from across the map there, trying to find the perfect bounce. That one was close. Does not looking too hot though. Tianba saying just thank you, Weibo. टियनबा का जर्सी देखो ना कितना प्यारा है चैट टियनबा का जर्सी and to at least secure this लगता है बीएमपीएस position. देख लिए थे But now they are stuck to straight snake play at this point. It's anybody's game. I like the positions there from D+. They have some very good coverage still here in the end zone. But this is stage 9. The zone gonna go down. The little boy stands up, and he gets knocked down immediately. The Fidder out. Influence Rage का भी एक ही बंदा बचा Ready to pull the pin on it.
But Tiamba have been doing so for the longest time. Tony K spotted out, eliminated, meaning top 3 is going to be Tiamba, D plus Kia, and Influence Rage Federal. But he's been forgotten about. They're not looking his direction. Tiamba is fully focused in on D plus. So if he plays his cards correctly, he might be able to get a second place here. That's what Federal should be trying to go for. As Fabian looking his direction, cooking that nade. Will it go in the dip? Goes a little bit too far towards that rock, which is a good idea. The Federal is a little bit more sneaky and is right in the middle of that dip in the open. Last nade. Federal has one singular nade. Can he make it happen? He throws it. Does pepper up Fabian. Meanwhile, Tiamba trying to cross the road here. Oh! Shutting him down, though! No way. It's Federal against the world. They get some moves. Got the shotgun. Confirming those eliminations. He needs all the points he can get. Ooh, getting peppered from the side. Back down, though. It's still a lot. Is a problem. Got the shotgun. Fabian. Intense, by intensity plus. Rondo here today, and that, my friends, is how you. Can we have D plus OP in the chat? I mean, they started off with a 1v3 from Nolbu in Neo. ये देख नोलबू के हाथ में देख चाकू है. Popping off from minute 1. सही मारता चाकू. They maintained catch end of Rondo and secure themselves a massive chicken dinner. Keep in mind, they are in group red. They played 6 matches yesterday, but this game in particular, Hot Tricks, I'm D plus OP in the chat, bro. I mean, D plus oh my goodness, was that game insane from South Korea. WBG, Aurora. That play from Nolbu off the rip, just disgusting. And I'm Let's telling go, you, chat. जो भी stream पे new आया है, do like and subscribe. Plays like that, 10,000 लाइक कर दो यार. बहुत टाइम हो गया यार अपनी कोई स्ट्रीम पे भी नहीं अपनी स्ट्रीम पे लाइव वाली स्ट्रीम पे 10,000 लाइक किए. बट वैसे तो चलो 10,000 लाइक मार दो. You can just feel that. You know what? I got some incredible players on my team. किक पे करना है क्या शिफ्ट? It's our time. And when you do that, Chat. especially in match number 1, किक it पे pays off. Nolbu. Nolbu is the MVP, and right कि यहाँ पे so, that YT man has the bullet in his hand, and he's going to use it. Oh yeah, that bullet's going right in your skull. Okay, that's a bit graphic, but it's still really great stuff. Nolbu, 3 of those eliminations, of course, came in New York RP का RP रात को and then got himself some solid 8:30 finishes. के आसपास. But what a play! And this is a guy that again we know he was MVP during PMGC 24 यार YT कर लेता हूँ. किक पे रात को कर. This guy किक पे यार ये is सब an बहुत absolute पार्टी. menace on the battlegrounds, and here we go. The first clip we're going to see is that 1v3 versus the side of Bulls. Look at his movement tech. He's down to 2 bullets on the S12K, and he makes it count against Elementary. What a play indeed. And you know what? There's many more from which that came from, and he's going to keep popping off for the entirety of today, Hot Tricks. I can tell you that much. Absolutely. Yes, kick chain में ले. कौन सा kick? बाप kick लगी क्या? Chain में ले. Rondo, especially considering where they were at the start of the day. Oh, look at this play here from GenFoss. If only he had the P90. Switches to a nade. Just way but too no late. backup. But no backup too, right? 10K likes why GenFoss maintained that 3-1 split. I feel like the only reasoning why they would have done that is because, by the way, this was a weird push from Weber. But the only reason I would understand why GenFoss remained there is because maybe his car was not in position and he just had to stay there. Which, if that's the case, that's unfortunate. But if he had the opportunity to regroup and he just didn't go for it, that's a bit more of a head scratcher. Not sure why he stayed away. But again, congratulations to D plus Kia for becoming your winners here on match 1 on Rondo. They'll take that all day long, folks. 12 eliminations, 22 points in total. With 5 more matches to go, they're looking My God, one more solid, especially with how pole. they played in that first match. That's it for Rondo. And that's it for Rondo when it comes to Group Red. So all they're going to have left is the 3 Erangels and 2 Miramars today to put. Oh my God! Oh my God! Rage with Red. 17 Oh, points अच्छा 11 coming point. into today, Max. पहला कौन To है? give some perspective, D plus. they have already almost caught up to Alpha 7. Yeah, that's what I was going to say. Alpha 7 has 23 D plus का जैसे कितना points. प्यारा है. And they got 17 Guys, influence rate in थोड़ा one power लेके आया यार. game. तब तक आप देखते रहो. Power लेके आया फटफट. This is really bad. अपन करेंगे for the watch side party of और. Alpha 7. ठीक है आ रहा हूँ. All of their street cred is just gone after PMGO Season 1, and if they don't qualify here for the finals, Alpha 7 are going to get trolled by not just anyone. You know who's going to troll them the most, Hot Tricks? It's going to be S2G. Oh, that drama on socials. S2G, oh, they're going to love it. Oh, that's so much good content. Oh boy, Alpha 7 putting up the donut in Rondo. We talked about it, right? If these, and Young on Galacticos with 2 points, we said both these squads, if they do nothing in Rondo, oh
the hope meter is at an absolute it's rock bottom. It is rock bottom right now. They're going to have to do something crazy in this next Erangel. And I'm talking like 25 points to inspire any confidence. Yeah, I would agree. I feel like we need to see some big moves here, desperate plays if they want to try and make it out of the bottom slots, which right now Yangon is, but they're still on the cusp, and keep in mind they will not be playing tomorrow. Same for Alpha 7, so they need to get some big points on the board. Otherwise, it's pretty much game over. Looking at the overall standings, of course, it's going to be S2G taking away that #1 place away from Al Ula. They did drop not just one slot, right? They dropped 3 slots ahead of S2G, LGD, and also D plus Kia. So still, top 15 is looking really good for Al Ula, but here, unfortunately, 3 teams overtaking you in game 1. It might be a bit of a tough comeback for them to reclaim that #1 position when Group Green is back on the battlegrounds. Yeah, absolutely. I mean, D plus 56 points, right? They're sitting pretty. I don't think they're still fully comfortable just yet. I think they want another, some good, decent little games to really just feel like, all right, we're set up. But these teams at the bottom, oh man, I mean, Wolves, even, RRQ, Alpha 7 and Yangon, it is not looking too hot. Yeah, it's not indeed. Looking at the second page, though, we're going to see still a few big names here that I wasn't expecting, especially Nongshim Red Force. We're looking also at Ulf down there. I'm not too scared. I feel like this circle, I don't know if you would agree or not, Hodrix, but it was kind of tough, right? It was moving mainly on the side of Tsiamba in the center and also RRQ. All the other teams on the edge, just like, try your best, Hunger Games, give it your best shot. And unfortunately for Nongshim Red Force, they were leaving Yulin in the open, and so many teams were looking their direction. I wish instead of just trying to survive on the edge, they actually committed to a breach onto Weibo, because then you'd be fighting in a compound and nobody would be able to third-party you too easily. But they got a bit hesitant, but it's game 1. I just feel like I want to see that confidence back in the next 5 games of today. Yeah, I do as well. You can see there the elimination so far for the days. It's going to be Tian with 14. Yeah, this is total for the tournament so far. So good to see these numbers coming out on top. Again, a little bit of these stats are going to be skewed, guys, because of the fact that Group Yellow, they've only played 1 match so far, right? I mean, so when it comes to a squad like Influence Rage, I'm putting them way higher on the leaderboards, considering that they did so well in match #1. But we can take a look here, the damage. Wow, look at that. QZZ. Making it happen. Nobu as well. These 2 guys are no joke. He got that much damage? My goodness, I forgot how good he did yesterday, I guess. But I guess most of his damage did happen in this game, especially in that 1v3 scenario. So Noble, GG well played. Tian also there for LGD. And then you got HamCG from S2G going to be up there, also almost reaching 3,000 damage himself. Which we do know, right? Most of his damage did come from that military island finish, where he was just taking those 1 taps from a distance, getting so much damage done, really padding his overall stats sheet. So HamCG, very happy. And I would say, going back at PMGO Season 1, I was a little bit upset with the performance of STG Hot Jukes, but here, they've rekindled that flame I have for this roster. And I'm telling you, they could go the entire way in the finals. I hope so. Their watch parties are going absolutely nuts. So excited for them. We got Erangel, though, coming up very, very soon, guys. Don't go anywhere. We're going to be right back. फॉग मार देता हूँ क्या रूम में? सैया मैं तो तेरे वास्ते full day of eating. Tozu please. Choker. Funniest GTA RP. क्या है कुछ मौशाला पानी कुछ है देखने मसला है
ये कौन कर 오, 니네 올라오가래. 자꾸 뭐 비려 봐. 그러고 너. अबे इसने गाड़ी दर्शन व्लॉग फिर से चालू होने वाले मुझे लग रहा है। समृद्धि महामार्ग बोलो या एक नहीं कोई ना ज्यादा आवाज। अच्छा ये बेच के न्यू गाड़ी मैटर क्या पता है क्या, ये लग्जरियस है बट इसमें वो मैसिव पावर नहीं है। हाइटेड क्यों लग रही है भाई गाड़ी? दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है मैं अंदर चला गया हूँ, मैं बहुत नीचे क्यों आ गया हूँ बे? अच्छा येलो हे हा येलो पॅटर्न हा ना, हा हे किती सुंदर वाटतं बे. नाही 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 एम्बिएंट लाइटिंग्स भी चेंज होती ये नहीं चेंज होगा ना, ये लाइट्स चेंज होगी सर. ये लाइट है. यस आईच्या रे गावात. अरे हाँ ये लाइट है, माँ कसम. एक एक्सपीरियंस फील कर रहा हूँ. डोर बंद कीजिए आप. हाँ एक म्यूजिक सिस्टम इसका टेस्ट कीजिए. ओके हाँ मीडिया डिवाइस साउंड. अच्छा न्यू गाड़ी ले रहे हैं. ये देखो डिक्की ऊपर आ गई और अब मैं फिर से बटन दबाऊंगा, डिक्की खुद ब खुद नीचे जाएगी मेरी चिंचुली. मैं थे तो अच्छा ये बेच के न्यू गाड़ी ले रहे हैं क्या? बेच के रियल टॉस करूं. हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. आप लोग देख रहे होंगे मैं कोई नई जगह पे हूँ. हाँ ये हमारा नया घर है. आई थिंक ज्यादा मेन है हमारा. आपको चाहिए हम लोगों ने, क्योंकि पता है आप बंदा नया घर लिया रियल टॉस. जिस नॉर्मल थोड़ा चालू भी नहीं हुआ है मेरे वाले फोन. आप नया गेमिंग रूम, नया घर लिया रहेगा ने. बढ़िया है यार. साले तो रेग लेने में गंडिया फट गई. स्पाइसी. एक लेने में फट गई पूरी. मैं के 6 मैन इंडियन लाइनर एक में हाथ में आ गए. लोगों के 10-10 आ रहे. अबे ये क्या करता रहता है नवा? लाइव मॉक टेस्ट. क्रिएट ओपनिंग कंपाइलेशन. ये सब क्या है? की तरफ से हमें आई कि हम लोग उनके राइजिंग स्टार प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए हैं. तो उन्होंने मेरे को एक कुछ तो गिफ्ट सा भेजा है. तो इसको खोल के देखते हैं अंदर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा. मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ. तो लेट्स गो, इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है. ज्यादा राइज कर गया हूँ. हेलो राइजिंग स्टार, वी एक्साइटेड टू शेयर सम इनक्रेडिबल. आई थिंक इट्स अ स्वेटशर्ट. इट्स गुड भाई. ओ भाई क्रेजी है भाई ये तो काफी. और मेरे साइज की है, मैन चीज ये. अरे यार मेरे को अपनी साइज की चीजें मिल जाती है ना तो अच्छा लगता है. मतलब ऐसे ना. अब किस पे जाए? अब जाते हैं येलो. जी इस पे भी. इसको मैं पीछे कहीं वॉल पे लगाऊंगी. लेट्स सी नेक्स्ट क्या गिफ्ट. ओह फैन है बजाज का. थैंक यू सो मच. अगर चाहिए था, मेरा फैन ऑलरेडी खराब हो गया था. ओह AI पावर्ड 4K वेबकैम दिया है दोस्तों. ओह माय गॉड. ओके यहाँ पर कुछ बैटरीज टाइप है. ऐसे बैटरी पर पड़े हैं esports अवार्ड्स के. हमें हेडफोन्स मिले थे जो इस बार हमें भी मिले हैं दोस्तों. ओह माय गॉड. डैम भाई, ये हमें एक माइक मिला है. हमारा पूरा एक पीसी सेटअप बनते जा रहा है जिस हिसाब से हम चीज. चलिए तो बहुत हेल्प. क्या बात है गाइस. क्या स्ट्रीम डेस्क की दे दिया? फ्लैशी आइटम्स के बीच में सीधा स्ट्रीम डेस्क की दे दिया. वाह. Let's see if they could do it here and now, Max. Oh, as the song in the break keeps on saying, it's a revolution coming. Let's go. I love the song by the way in the break. I don't know who decided that was the playlist for PMMI. You should get a raise because I'm really enjoying it. I'm vibing. I mean, you know, just we keep vibing during the break. Like, it's a revolution. With that said, looking at the drop locations for some of the teams. I'm not expecting 15,000 का है स्ट्रीम. हाँ वही स्ट्रीम डेस्क की दे दिया. वो थोड़ा शॉकिंग था भाई. स्ट्रीम डेस्क. Looking, I'm like, wait a minute, this Yangon Galacticos maybe looking to have a clash over there, and also in farm. W for supporting. Okay, I lied, guys. Apparently, I'm sorry.
Why are the hot drops happening? I thought this was all going to be resolved in scrims, but no, you have Goat Team versus Yangon Galacticos and Novo, and in Farm you have Wolves versus, I can't quite see the team. It's going to be the side of Nongshim Red Force. What? Unreal. This is like do or die here for Wolves on all honesty. Wolves have to win this fight. हाँ मतलब वो barter kind of barter system है. Okay. Has a shotgun. That looks pretty good. Let's see what he can do in here in this situation. Thing up close and personal. Baton is with the pistol though, and for the side of Nongshim Red Force, these guys are kitted out of their minds when it comes to weapons. No M16 armor though. Yeah, M16 or QB. So easy. That's going to be a good pump to the face. Nicely done with the DBS. They fought Nolbu earlier. It didn't work versus South Korea. They're like, let's fight another South Korean team. We'll see how this one works out onto us. They do confirm so easy. Nice. Good execution. Very quick on the pivot. But Hyunbin was able to get a little bit of elevation here. Jumping up top. Trying to reach this elevated area of the building if he can on the balcony. But the thing is, when you only have these few buildings to loot up, you're very low in terms of resources, in particular utility. I'm not seeing any nades or molotovs available. As you said, Baton with a pistol here. Hyunbin with the UZ. You know which one's going to win that fight. So we'll see if they try and send it forward, but it's a 3v3 here. Yeah, there you go. Look upstairs. Get out of there. Baton, you do not want to deal with the suppressed Uzi. So, man, geez, look at this. This is like just a game of chess right now. Is who's going to make that first move? Who's going to make the play? You know, Nongshim Red Force. Someone found an M249 though. Yeah. That's Elementrix. That's a great start. Baton both with shotguns. Oh, yeah, good elevation here, Tizzy. Yes, I love it. I love it. Good play. Trying to go for the jump shot. Uzi! Oh, my goodness! The Uzi from Hyunbin, the drop shot from above. He gets the surprise drop onto Elementrix. Necessary also falling. Baton, sole survivor here. Full squad of Nongshim Red Force coming his way, and it's just not meant to be. South Korea once again taking down North America. Shooting some boxes as well. Disrespect Wolves. भाई destroyed. सिर्फ इंडियन लॉबी को डिस्ट्रॉय नहीं करा था इसने. 0 points. Okay, 34 in total. Ain't gonna do it here, man. That is हम. not gonna get you to the finals. So, I mean, at this point, it is double chicken dinners to stand a chance for Wolves. Yeah, it's not looking good. No. Not looking good. Hey, you know what? It's looking even, I would say. Okay. Pretty bad. Not pretty bad. Yeah. That is a good call. What do you think about Goblin decision? Here you go, though. Yangon Galacticos minutes got the surprise angle. They did not expect him. What do you think about Goblin decision? That wall. Team playing for का कोई available नहीं है तो किसी टीम का film practice करना चाहिए मुझे कैसे बनेगी? Yeah, no comments. No comments on that. But वही है कि player अगर bench है तो वो भी तो अपनी practice करेगा ही. You're asking him to do a 1v4 here. Come on, you need to give him a little bit more support. Finally, they do get there. Looking for the final player. It's another one picked up by Monet. He's got the 3-piece. Can he get the 4 eliminations onto Goat Team as only focus remains in that? पाशा भाई PUBG जब आया था तब से खेल रहा हूँ प्लस देख रहा हूँ बाहर की टीम और इंडियन टीम में से एक ही फर्क है वो है टीम वर्क इनके कवर इनका क्लोज इतना खास नहीं है डीओके. We talked about just how desperate they are, right? And for them to win that fight off the rip, hopefully that is the motive. हाँ यार देखो वही है but to make something happen here in this strategy wise वो लोग बहुत ज़्यादा strong है हमसे strategy wise है ना बहुत ज़्यादा. I don't understand why. भाई 10,000 likes में उन्हें कैसे से हो भाई? नकली का support 10,000 likes का it's not worth it. It's phase 1. My rule I like to give teams when I'm looking at esports is if you can't avoid the fight, phase 1, phase 2, just go for it. It is not worth it. It's just a pure ego fight. In that case, Goat Team were just so ego-driven. Like, yeah, we want to send it. We want to spill blood here on Erangel. And, well, they took me out to the hands of Yangon Galacticos. So really, I hope that's a good lesson. भाई फर्क है strategy का फर्क है gunpower. To be honest, causes you to slow down. एक सबसे बड़ा and in this case, if your Goat Team misconception ये है कि हम सोचते हैं कि at the bottom of the rankings, which we know is not हमारी gunfight इनके साथ equal है. Now where you want to be
क्योंकि जब हम गन फाइट इनसे हारते हैं तो हम अपने मन को ऐसा बना लेते हैं कि गन फाइट की बीटी नहीं होगी, स्ट्रैटेजी की बीटी होगी। What else can I say? He's nailing it, guys. I mean, it's so true. एक आपको it's just ब्रूटल wild. फैक्ट बताता हूँ I'm still kind of a little bit shell shocked here. कि Lost for words when it comes to एक स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग टीम और एक गन पावर वाली स्ट्रॉन्ग टीम में हमेशा एक गन पावर वाली स्ट्रॉन्ग टीम ही जीतेगी। क्योंकि मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि अगर आपकी टीम गन पावर वाइज स्ट्रांग है और फिर आपका आईजीएल अगर गलत कॉल भी दे, जैसे कि ये जगह पे पुश करते हैं, उसने समझा ऐसा गलत कॉल भी दे दे, बट अगर आपका गन पावर इतना स्ट्रांग है कि आप मार दोगे तो वो उसका गलत कॉल भी सही हो जाएगा। बट वो एक स्ट्रैटेजिक टीम पूरा स्ट्रैटेजी लगा लेगी, इधर से रोटेशन उधर से रोटेशन, ये होल्डिंग वो होल्डिंग, बट जब मारने की बारी आएगी तब बात तो गन पावर पे ही आ जाती है ना। अगर वहां गन पावर तुम्हारा एवरेज है तो जो अच्छी गन पावर वाली टीम है वो तो तुम्हें मार देगी। यही होता है। आप देखो सोल जो बीच में डोमिनेट कर रही थी, क्यों डोमिनेट कर रही थी? क्योंकि उनके 4 प्लेयर्स का गन पावर चल रहा था। Okay, Ulf, it's going to be Aaron and Ketch sending it as a जब duo. TX डोमिनेट कर रही थी तो चारों का गन पावर चल रहा a था। single pixel. नकुल तो आईजीएल तब भी था जब लोग they have no idea they're up टूर्नामेंट here. लगातार जीते And हैं। that surprise might बाकी completely पोडियम catch them है। off guard. We could lose 50% of और Ulf अभी in भी just तो a सेम matter of स्ट्रैटेजी वो लोग seconds यूज if कर they're रहे not हैं, careful. जो उनका गेम प्ले जैसा स्ट्रैटेजी है। बट अभी क्यों लोग ने चोक करा? क्योंकि अभी सबके गन्स नहीं चले ना मेरे भाई। गन चलना You said you ज्यादा thought you इंपॉर्टेंट caught है। me. No, I caught you. Catch with the turn there. And I tell you what, he's saying a कितना भी prayer. लगा As you लो। can see his photo right At the there. end of the day Because he was मारना like, ही "Woo, है। that was way too दिमाग लगा के close. I जीत did नहीं not like सकते। that." जीतना है तो दोनों You चीज need it. इक्वल He होनी needs to चाहिए, pray दिमाग for him भी right और now. He गन just पावर भी। disrespected him as Hyunbin. Jump scare. Gonna be now बाहर वालों का the गन पावर भी last स्ट्रांग है, one left दिमाग here. भी स्ट्रांग है। Stranded solo player of Nongshim Red Force. And the guy is good. But Ulf is also really good, and they have more players. रोजमेरी की टीम क्वालीफाई नहीं I करी would say है। the odds not looking too good for Nongshim. And they know there was a solo player here. They're like, okay, we're going to check every nook and cranny, every corner, every place in the shade. Could have a player, so we're just going to be very cautious. So they're on full alert now in that compound. Yeah, don't जो mess आपका around एनालिस्ट here. हम Oh, but बहुत look who अच्छा it is. लगता है, आप It's सच Hyunbin. बताते। Hyunbin against Ulf. DBS in hand. It's not the S12K. Let's see what he could do. Hold the stairs. Ah! Oh, he missed it! Goes for the feet, and Aaron turns up and इन्होंने shoots कनेक्ट the तो करा भाई, लगा नहीं boxes. इतने क्लोज So you रेंज में trying to भी। surprise me? Wow. Ulf. ऑडियो ब्लर है, किसका There's ऑडियो the ब्लर element है? of surprise मेरा। here, Max. I mean, you actually saw there, Aaron was actually very low HP wise. I feel like that's a knock-on effect of the nerf. I feel like if it was pre-nerf, maybe because of the bloom being a little bit more concentrated, I feel like maybe Hyunbin would have got that elimination. So we are sometimes seeing moments where it's so close that the nerf is actually taking effect. So I feel like update 4.4 is very interesting for the esports meta. Maybe should have gotten himself a JS9 or a UMP or something else, and it would have maybe यही actually शॉट gotten का that समझ नहीं first आता क्या? elimination हाँ with इतना Aaron. मुंह पे मारा यार I उसने। do like that the meta is इसमें तो हुनबिन की गलती भी नहीं हो, नॉक होना for चाहिए था वो sure, बंदा। slowly but surely changing every single patch, and I cannot wait what's going to be happening in update 4.5 with the nerfs. I believe there's a big change to the Ace 32, which is a great weapon, and they're changing the recoil, so maybe that will be a metal weapon in the future. Yeah, we'll see how it goes. I कितने think, fights हो I रहे think भाई? the actual scenario दो टीम, तीन टीम is एलिमिनेट। these players are just not used to that bloom just yet. Once they lock it in, though, they'll have a good idea of like, okay, the shot has to be here, or I'm not getting the knock. And then once they make that adaptation, then they're going to be locked in. You know what I'm saying? But since it's just such a new change, I think they're still trying to go with that old style of, okay, if I shoot in this direction, it's an easy shot. But ठीक है, it's not जैसे working out टीम for के them. प्लेयर्स But, you know, we'll see them गन tweak फाइट का ही है tweak भाई, it little देखो। by little here as अभी time भी goes इंडिया on, जब and बाहर we'll see जाएगी that ना, shotgun आप just देखना be OP. अगर डिफरेंस दिखेंगे आपको तो गन फाइट में ही दिखेगा। स्ट्रैटेजी I wonder if the तो चलो TBS is going एक to टाइम को become a तुम्हारी little गन bit फाइट more स्ट्रांग है meta तो now, गलत because you got the डिसीजन भी सही back-to-back हो shots, जाते right? हैं You got two बहुत shots, बारी। boom, boom, instantly, while as the S12K's got a अगर little तुम्हारे bit of बंदे slower अच्छा मारते cadence हैं to it. I do wonder if we're going to see a bit of a difference where the DBS comes slightly more into the meta. As Weibo, hey, good shots here, able to put himself back into hiding from Nigma Galaxy. But yeah, I think DBS is slowly coming back into the limelight because of the shotgun iterations. It's totally possible. That's for sure. I always day love we seeing might- different weapons become meta. Wait, shit. Oh, yeah, he can get on the rooftop here. If you, I believe Yeah. he used the
You got the assist feature to push some of your teammates on the roof, or otherwise there's a way you can parkour around it. So maybe that's what they did. But yeah, that roof is a bit deadly, especially when it's almost dead center on that circle. So got to be careful. D+ looking properly set up. D+. Getting all the sidelines they can, doing all. You see Fabian now driving out, trying to get some scouting done, figure out where some of these teams are located. And this next circle, we'll see where it decides to shift to. मुझे लग रहा है इस बार अच्छा कर लेगा. मुझे भी लग रहा है पावर अच्छा कर लेगा. पावर इंडिविजुअली अच्छा कर लेगा. I'm going to be looking at some of those squads that need points. Individual fights वो निकाल लेगा पावर. Let's see where the zone goes. Okay, it's going to go down south, so it's going to be a party near farm, and all these teams on the top are going to have to push their way on down. Squads like LGD, RRQ, Ulf, Tianba set up so well in this one, and you can see Influence Rage on the move immediately with Weibo. I'm getting very confused on the map because you have 4 teams with the purple name tags. You got Influence Rage, you got Neyoo Galaxy, S2G, and Yangon Galactic. Pull up. This is weird too. It's Weibo sending it right onto Neyoo Galaxy's building. Though, let's see if the defense is going to work out. Ado, good pop here with the DBS, trying to get himself the rest of the team. Looking for that one player's 33Z, getting dropped on his knees in submission as Sook, Soul Survivor, trying to make it work out from that shed. He is going to be in nade range, but unfortunately here, Weibo again decimated upon a compound breach. It's just not working out for them today. Yeah, Weibo, they did get some eliminations early on in match number 1, and they're making very quick rotations, but just everything's taken, and Neyoo Galaxy doing a good job of stiff-arming them, slowing them down there. And now दीदी को पटाना है क्या आपको? राखी भेज दो. पड़ जाएगी. I mean, I get why they'd want to breach it, right? But it's because it's center circle, but it's not a compound. It's literally one building. So I think there were better options. Maybe going on to RRQ's compound, maybe even E-Arena's compound or RRQ right next to them. But this one is so risky, especially because as you send it, so many teams can look in on here. I think there were better options. I feel like it was just a bit risky and didn't think about it too much, in my opinion. I don't know how you feel about that, but it was a Hail Mary send for sure. You know, it's one of those things, right, where I do agree. There's definitely some better options. The one thing I love about them, though, is that all or nothing play style. So much like, they really do. Yeah, they do commit, right? And if they get the eliminations and they're able to get that secured, I mean, they got points and they're set up, right? It just so happens that fight didn't work out for them. So it's risky, but I like that they're committing as a full team. Like I prefer. भाई तुझे तेरी audience बनानी है या जो views दे और निकल जाए. I like your and then just die out anyway. You know what I'm saying? I like your PC, it's just a little wild to see so early on. You know, it is stage 3 after all. Yeah, no, I get your point. It's definitely they committed to a play, which is, we were talking about that a bit yesterday. But here, a play is going to be committed to. It's going to be the boys from Turkey, S2G, taking it to KSG. The Chinese squad. It's going to be Z-Boy surviving here. Looking to get the fight, but it's just not going to happen whatsoever. S2G going to get the reset to Kami. It's going to be Kami, Solke, and Lost remaining in this game. And they got an interesting 2-1 split too, where Solke is actually the off angle down south. So they will see if they can try and reclaim that position at one point. But hey, S2G again looking so good, so consistent, a massive level up compared to their performance back during PMGO Season 1. Absolutely. Let's see where this next zone's going to go. Will it center up here? It does go up a little bit to the top here. Alpha 7 are now going to have a little bit more breathing room. S2G, though, going to have to find a spot into this next circle. Everybody else in the center is going to probably just stay in their spot for now, as we got 3 teams that need to find their way in. There must be so many death crates in this compound. You got all of Nongshan Red Force. You've got all of the side of Wolves here. Man, the loot must be actually that good because they only looted that compound. But it's definitely a lot of crates. They're all just like sprinkled out throughout that compound. As D+, they've got to start thinking about their own rotation. They do have Sizzy over to the eastern edge, so he's trying to get a bit of insight next to farm, see what the hell's happening over there. So I feel like in terms of information, D+ will be good, but chances are they will have to go for somewhat of a breach, maybe onto this particular Alpha 7 compound, because it's the closest and it's got a good view of literally every single area in this circle. So naturally, the progression of the game would dictate that D+ would crash A7. Maybe not this circle, but phase 5, it's going to be looking very, very likely. D+, again, a team that, when they're defending, when they're pushing up on a compound, Hot Jukes, they're always a threat because their team synergy is just so damn good.
so good is right. And you can see Master Smile getting some good nades on the Influence Rage. Young Galacticos down to 3 players, but putting some points on the board. They had a great game 1. They're actually very, very split here. You're rocking a 2-1 LGD and WBG are fighting for EWC slot. यहाँ से EWC का slot है? They need to have consistent games today, all day today. Pretty much all their bad games were yesterday. They can't have a bad game today, really, if they want to be able to make it into the finals. Let's see if these two, let's see if these 2 players can get to their teammate. It looks like they are going to be able to. Look at the minimap. It's all purple. Every team's purple. Right? It's a 12-man team. What's happening? यहाँ पे हाँ ना सब By the way, purple. LGD, for those who paid attention to the map feed earlier, they had this massive split around this area, also to the western side on the cliff and next to Double Warehouse. And they had such a quick regroup on Circle 3, I believe it was. I love the IGL. I think Admiral will do this. क्या EWC में drill They see a होगी? situation and the response is like in a matter of 5 to 10 seconds, and they execute their game plan so quickly. I'm a big fan of their overall macro. And now in this compound, they're in circle. They got a few teams around them. They got Yangong, Influence Rage, S2G. Got to be careful because again, they are surrounded by a 12-man team. It's a lot of purple players here. A lot of purple players is right. You can see LGD put some shots. भाई कितना purple ही purple है भाई. Trying to pepper him up a little bit. Right now, this is that calm before the storm. ये YG की purple है, S2G की purple है, INF की purple है. Don't get knocked. Just take your time. Wait for the next circle, then make your move. Top 2 slots है nice knock there for on PL team EWC. I'm looking at the map. इसमें अगर PL की कोई भी team top 2 आई तो उसको slot है EWC का ऐसा. I don't know why they would go here because this compound is always occupied in these particular circles, and they were able to scout it from the northern high ground, so they knew there was going to be a team looking to shut down that rotate. Nade, little bit overcooked. But yeah, this rotation, I feel like they were just like we talked earlier for Weber, right? There were just better options available for them, and in this case, that is going to completely तो destroy LGD अगर second चल रही है तो उनको मिल सकता है slot अगर finals में second है तो. So Nade gets nice a bit more of a there, tickle, yeah. but yeah, like here, this game is just in the bin for D plus Kia. Yeah, it really, really is. Oh, nice shots there from Catch up top. They're gonna keep applying that pressure outside of the circle. यार आप लोगों को तो बहुत knowledge है मैच इतना follow करते हो क्या closely? Pushing into this next zone is going to be the priority. You can see Catch getting a good lay of the land on Tianba. But man, that's a big question. Do you think Wolf are going to be able to be pushing into that fight on the outside? You should. Nobu. Yeah, Nobu up close and personal with Tianba 1v3. We've seen him do it a little bit earlier. He has the S12K now. What can he do with it? So much pressure from Tianba. That's how you shut down a player like Nobu, right? Just overwhelming force, full squad. Tianba making it happen there. Just fully surrounded. I mean, there was no wiggle room for him to make this work out. And I feel like they would have been a good third-party option for Ulf if any player on Tianba gets knocked. In this case, they read the elimination feed. मेरे को पता नहीं था ना कि standings क्या है. मुझे लगा था already really willing to take that fight when it's just not worth it. It's outside of the play zone. I would say give it up. There are better options available for you. Those circles last time EWC कौन गई थी अपने यहाँ से इंडिया से टीम आर्यन ना Rage and S2G alike. So they have to start to push up, move forward towards the direction of LGD and also Yangon Galacticos. Actually, LGD's compound is also not in the playable area. So this is going to be a bit of a race to see who's going to be able to take away Yangon Galacticos' location, because one team goes for the breach. It's going to be a third party, possibly followed up by a fourth party. So we're going to have a bit of a southern party here very soon with all of those 4 squads getting involved. PMGC जो लोग खेले थे पता है आपको? उनको Balenciaga का जैकेट मिला था PMGC की तरफ से. Balenciaga PUBG edition जैकेट. Throwing down the मैंने और लाला ने smokes हम लोग जो on the edge of Balenciaga the गए थे circle. 2 लाख की The only way they're जैकेट. going to be able to make something happen in this match is with those weapons in their hand. They're going to have to hit some big shots and make some plays. This is not a game that is gifted to them. That is for sure. One team that is, slightly gifted, actually I wouldn't say slightly, pretty gifted here in this match is going to be RRQ. And they're another one of those squads that needs those points. So they're going to have the big compound in this circle. To be honest, chilling. second time that compound though, it's kind of hard to defend as a full entire squad. If the full team crashes one side, इतने सालों में पहली बार कोई टीम को 2 बारी चांस मिला है. But right now it is so far away सबको एक एक बारी मिलता था तो चलो वो benefit of doubt रहता था कि first time खेल रहे हैं. But ये हो second time में they already know कि कैसी lobby है. They know what they did wrong last time. कहाँ पे share it, work together, have that symbiotic relationship, and then start to fight each other later on based on the circle. Though it's going to be S2G
मेरे Closing हिसाब से that तो ये gap टाइम हो जाना चाहिए onto होगा। Influence Rage. Seems like they don't want to go for the Yangon location, which is what I was expecting initially, but no, they're going to send it right onto Influence Rage. They've got to be careful. You do get closer. It's a bit hard to nade this location. And luckily enough, they do have a hovercraft. If any nades are coming their direction, they can easily tank it by hiding inside that vehicle. Influence Rage, they do have Loranzin holding up the ridge line on top of this rock formation. And he's going to get a good idea of where teams are located. Then the circle, they're going to have a good time. But LGD, they don't have that comfort. They need to push, and they're sending it right onto Yangon Galacticos. And so far, things are not going great for those two squads. Yangon Galacticos need to find a way to defend Tianba this. तो They दे need रही to है survive भाई। in this match here. You can see Murnett starting to throw out all his utility. Will that nade be good? Nope, it's going to be a little bit short there. They are going to lose Master Smile in that shack, though. That's what I'm talking about, is you try to hold a position all by yourself, but if a full team crashes it, it's just too deadly, and Murnett getting peppered up. Things are not looking good on the side of Yangon Galacticos as Kami, S2G, now applying some pressure, looking to steal some eliminations. का तो पूरा ही मार रखा है। Meanwhile, though, Influence प्यारा Rage, खेल they रही hear this है action, and they're going to be coming in for that third party LGD तो immediately. क्या प्यारा खेल रही है भाई। This is what I was talking about. अच्छा लोग ने The rotation moment देके one pull fight करा। breaks out down south, it's just going to be third party after third party after third party. Right now, S2G are the one that went initially for the third party, but Influence Rage want to try and sandwich it on the Turkish team. And so far, it's worked out. Solcate going to be taken out of the picture entirely. Deal कर लेना चाहिए The यार। elimination feed is just lining up. Influence Rage, look at the minimap. They're thinking better of it. It's not really in the circle. Is it worth investing that much? I would say going for a Western rotate possibly and looking to push onto RRQ could be more valuable. But no, instead, it seems like they really want to try and get involved. LGD do find that final player of Kami. That's going to be the end. Still remaining in number one position for S2G. So having a great day here. AG is qualified for AG gone. Now over to the northern edge. It's E-Arena, it's Jumba and Alpha 7 all clashing, vying for that terrain control. Could this be the chance for Alpha 7 to finally open that door? They have one elimination so far. Their backup is against the wall. This is kind of where they do their best work. All gamers. Where all they have to do is have the whole squad All just gamers focus कहाँ की team है? all their energy, all of that firepower into one singular direction. I think E-Arena is going to be their big fight here coming up next. Rebel gets the initial knock. Do they make this push here? Rebel's going to throw a nade. Trying to hit that player on the roof, Joker. No way! And they get it! That's it! It is time to go! Oh, but Carrillo gets knocked from the backside. That's going to slow them down on this push. Oh, that was a perfect opportunity. Now Rebel getting picked up. Sook! And whoa! No way, Sook! Sook! Oh, Downtown! From the shed, there's no way he's got the off angle. He outlives Jamba in that location. He was not spotted out, and now Sook is getting the angle. He does get nailed up by Satan eventually. But he just slowed down the entire assault of Alpha 7 onto E-Arena. And because of that, E-Arena do get an almost full squad reset. Actually, no, they do get the full squad reset. It could have been so beautiful for Alpha 7, but Sook as a solo ruined it for A7. And now back into hiding, into nade range. 10,000 likes होने वाला like करो, like and करो. with the circle, it's not looking good for A7, and they're just going to keep chucking that utility to eliminate the Brazilian team. Pado, like everything is going wrong for Alpha 7 at this point. I mean, that was such a perfect, picture-perfect start to that fight for Alpha 7. Nade. Yeah. And then Sook just said, nah, shut that down, you know, and E-Arena were like, thank you, Sook, I really much appreciate you, as they start throwing some nades in this direction. And Alpha 7 just desperate, just, oh, what could we do एक here? साथ कर दो भाई, But 2.3 it's के just likes too late. only. It's just too late for Alpha 7. Got to be careful though, E-Arena, to not waste all of your grenades. I know you really want to get rid of A7, and if I were you, I want the same, but you want to hold on to a few of those resources if you want to have a chance for the actual chicken dinner. Circle shift now into phase number 7. And the compound of RRQ is still going to be in play. So E-Arena need to leave, Alpha 7 need to leave, and so do the southern teams in LGD and Influence Rage, even Enigma Galaxy over to the eastern side. Everyone has to move except for RRQ. This should be at least an easy top 3 for them, but they did fumble it last game on Rondo, Hot Jukes. Can they redeem it here on Erangel? Let's see if they could do it. RRQ need to honestly stand up and start getting some eliminations as well. Yeah, you got pretty much a lock here. किसका चिकर होगा चैट बताओ. Points, but you got to find some of those eliminations. RRQ का हो सकता है, RRQ पे zone center है. They got some great sight. Joker gets the knock on the Obscure. Worst timing here for Alpha 7 as the zone is starting to close. That nade looks good, and that is going to pepper up both these players. E-Arena, are they going to start making that push? Hop in the vehicle, but second thoughts.
They got to make a decision here. They are outside of the circle. They got to move. Oh, Nigma Galaxy sending it forward. Satan in particular up there with Ado. And he got 6 nades. I love this play from Nigma Galaxy. Snuff them out. The blue zone's making it very easy to predict where they're going to be located. They're going to hit that nade instantly. Satan, so quick on the move. The nades, though, coming back also towards the location. Obscure taking a bit of a beating. One more nade, and it could be the squad wide. But E-Arena say, no, we want to be involved in this discussion. They're going for the push, getting the points onto Alpha 7. But he's got himself the MG3. Nigma Galaxy popping off. But Satan doing so well, looking to take it to the side of Thailand. Looking for the sole survivor here. He gets the MG3 spray, gets it done once again. Satan against the world, and he is winning. Oh, not now. But Mormon shuts it down at the last second. E-Arena did. I don't think they expected 2 squads in that fight, but they make it work for now as E-Arena down to a singular player. Put some points on the board. Lawrence switches weapons at the worst time. RRQ, now's your opportunity for elimination. Hell no, bro. We are not even close. We are not equal. He's alive. Oh, his dodging there was just so peak. Really good execution. LGD. Now it's going to be a 2v4. And they're sending one player solo. Commando mode. It's going to be Tian. It's just not meant to be whatsoever. Good try, but unfortunately it's just not enough. And they do find the final player. And that is going to be RRQ win. In the chat, but finally getting their first chicken dinner here. And they will do it in style on day 2 of the group stage. Main expansion chicken dinner at the right time. Oh, man. They definitely needed that one so desperately. And it feels good when it's handed to you on a silver platter, Max. True. By the way, I lied. It's their second chicken dinner. I just didn't remember they got chicken dinner yesterday. My bad. It's the second one. They'll take that one, though. They'll take that one for Fast sure. and lethal, yes, bro. Right? I mean, they had a chicken dinner, and we talked about it yesterday, too, right? About how, like, man, they're so far down on the leaderboards with that chicken. सबसे पहला इवेंट पबजी का चाइना की टीम पहले 2 चाइना की जीती थी फिर 2 आरआरक्यू जीती आरआरक्यू वो टाइम पे बहुत डोमिनेटिंग टीम थी जब उसमें G2 G9 that's the problem, Max, is tomorrow G9 all those squads are going to know exactly और कौन-कौन था अर्नी G9 top 15 RRQ. They are just guessing at this point. Yeah, really happy with their game here. 50% contribution plus for the side कौन of थी the तभी RRQ में so many more points on this game. G2 and G9 and also just so much control on that compound. I remember why I didn't think it was a RRQ chicken D2E. dinner. I thought it was won by Furia, and they kind of subverted expectations and got the chicken dinner. That's why they did get chicken dinner yesterday on game number 5 on Miramar. So overall good game, but yeah, the Hot Drops in particular. This is my big question. Hot Drops going into game number 3. Are we going to see these clashes resolved in farm and also in the side of Nova? Because these fights are really slowing down the ascent of some of these teams. They cannot afford to go for the Hot Drops. It's really just, it's shutting down your entire tournament if you go out early. For sure. I mean, what do you do if you're Wolves, right? I mean, Wolves got taken out. Indian reality TV shows. अभी मैंने एक नया reality show देखा, Alliance. सर, Alliances के नाम आ गए. स्ट्रेटर्स और राइज एंड फॉल के बाद अमेजोन ने अलायंस निकाला है. अमेजोन अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीख ही नहीं रहा है एंड हमेशा की तरह एक डच शो का रीमेक बना दिया इंडिया में. क्या चल रहा है इस भाई केश वाला AKA हम देख रहे हैं इंडियन रियलिटी शोज. वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो जहां LI से ज्यादा लाइज होंगे. 16 कंटेस्टेंट्स 8 जोड़ियां. एंड मैं सोच रहा था कि भाई रियलिटी शोज के साथ गलत क्या हो रहा है आजकल. देखो प्रोमो. दुनिया में आने के लिए तुम्हें डॉक्टर के हाथ लगते हैं और जाने के लिए 4 कंधे. तो ना तुम अकेले आए हो और ना ही अकेले जाओगे क्योंकि ये दुनिया अलायंस से चलती है. दुनिया में आने के लिए डॉक्टर के 2 हाथ लगते हैं, जाने के लिए 4 हाथ लगते हैं. इसको बंद करने के लिए बस 1 हाथ एक रिमोट चाहिए. वाह सर, क्या बोला है. लेकिन इस शो में ऐसा कुछ भी नहीं होगा. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अलायंस. बेसिकली शो का ऐसा फॉर्मेट है कि 8 पैर होंगे जिसमें 2 लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं. अलायंस. लेकिन सर, केजो से लेके भाई तक और आपसे लेकर कोने वाले नाई तक सबको सेम ही तो लगता है. तो इस शो में अलग क्या हुआ? अलग ये है कि हम देखिए पाप, पिक्चर का नाम नया दौर रखने से पिक्चर नहीं हो जाती, समझे? उनको लगता है क्योंकि शो का नाम अलायंस है तो यहाँ अलायंसेस बनेंगी. लेकिन सच तो ये है कि पहले ही दिन से इस शो में अलायंसेस टूटेंगी. एंड हर शो की तरह इसमें भी मुझे लगता है शो रनर्स पूरा ट्राई करेंगे कि इनके बीच में झगड़ा हो. लाइक लिटरली हर शो आजकल जो आ रहा है यही कर रहा है. एंड प्रॉब्लम यही है इंडियन रियलिटी शोज की, बस एक जगह पे बहुत सारे लोगों को लॉक कर देना है.
रहो मरो मारो, यही कंटेंट है। मुझे लग रहा है रियलिटी शो कम जू ज्यादा लग रहा है आजकल ये सब। ये है अलायंस की सबसे स्ट्रॉन्ग जोड़ी, पापा और उनकी परी। सो प्योर, सो स्वीट। लेकिन क्या है ना, मुझे मीठा पसंद नहीं। क्या है ये रे? ऐसा लग रहा है महंगा एयरबीएनबी रेंट कर लिया है 40 दिन के लिए, उसी में फेंक दिया है सबको। एंड शो को होस्ट कौन कर रहा है? हमारे अपने कुणाल खेमू भाई। आजा चाहत के रंग चढ़ा जा, इनको तू सुन ले, आजा चाहत के रंग। क्योंकि मैंने सुना गो गोवा गॉन 2 आ रही है और ज़ॉम्बीज की कास्टिंग करनी है। बेसिकली गोलमाल के कुणाल खेमू की आवाज में कहूँ को बेसिकली गोलमाल वाले कुणाल खेमू की लैंग्वेज में बोले तो कुत्ते का नाम गाइस रुको, आ रहा है। बेसिकली कुत्ते का नाम मसक्कली रखने से वो कबूतर नहीं बन जाता, वैसे शो का नाम अलायंस रखने से वो बिग बॉस नहीं बन जाता। लेकिन शो का लाइनअप बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है बिग बाजार ही खोल दिया है सेलिब्रिटीज का। रवि किशन, पायल गेमिंग। इनको गेम्स खेलना बहुत पसंद है, पर यहाँ ये एक दूसरे पे ही चीट कोड यूज करेंगे। रवि किशन को देख के एक चीज तो क्लियर हो गया, हर चीज होम फ्रॉम वर्क नहीं होता। होम फ्रॉम वर्क इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जरूरत था रवि किशन दादा? जिंदगी सच में इतना झंडवा हो गया है। अभी अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो घर जाके सुत्ती बाबू। शो में आपको डीजी शाह भी देखने मिलेगी। भाई सलमान खान के साथ डेब्यू किया था। हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं। Our business is our business, none of your business. रेस 3 के बाद जो सबसे ज्यादा मुरझाया है वो ये डेजी है। शो में डॉली जावेद भी है क्योंकि उर्फी बिजी थी। आई थिंक सिर्फ पायल गेमिंग परफेक्ट कैंडिडेट है ये शो के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि उनको कैंपिंग करना आता है। वाह सर, क्या बोला है? वंशज रियलिटी शो पे रियलिटी शो कर रहे हैं। अच्छा कंटेस्टेंट आई थिंक साबित हो सकता है। मैं बता रहा हूँ जो लफड़ा सेंट्रल में आते हैं गाइस, मैं फ्यूचर देख लेता हूँ। बट वीडियो बनाने का पॉइंट यही है कि भाई सब रियलिटी शो एक जैसे क्यों है आजकल? जैसे एक ये देखो, मेरा बच्चा हम दोनों के लिए जान देने के लिए बेसिकली रियलिटी शोज रियलिटी से इतने दूर जा चुके हैं कि इसरो को भी इनको ढूंढने के लिए एक और रॉकेट भेजना पड़ेगा। यार जिसके लिए आया उसके लिए करने दो ना, मुझे यही सब करना है तो क्यों बुलाया मेरे को फिर? अरे she's crying यार, हमसे सब प्यार से बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम विद इंडियन रियलिटी शोज। आप देख रहे हो इतने सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं मार्केट में। पत्थर उठाओ तो एक रियलिटी शो निकलता है, उसमें से तो कितने क्रिएटर्स भी कर रहे हैं। ये आज हम बात कर रहे हैं उन टैलेंट रियलिटी शोज की जिनका टैलेंट 2 घंटे तक ऑडियंस को एंगेज रखना है बस। ये हर तरह का ड्रामा करेंगे ताकि गलती से कंटेस्टेंट्स का टैलेंट ना दिख जाए। 5-6 लोग के लिए भी इट्स नॉट अ क्रैम्प्ड स्पेस है जिसमें आप लोग मूव नहीं हो सकते। 6 लोग हैं ग्रुप में, सिर के ऊपर थोड़ी परफॉर्म कर सकते हैं ना। 6 क्या मतलब 12 लोग को आराम से नचा सकते। मुझे नहीं लगा कि वैसा वाला कुछ है। पहले तो आर्टिस्ट में लड़ाई हो रही थी, अब जजेस में भी लड़ाई हो रही है। रेमो सर की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस थी ये। मुझे नहीं लगा कि वैसा वाला कुछ है। तभी बोलो ये शो की टीआरपी के साथ साथ स्टैंडर्ड्स भी क्यों गिर रहे हैं। एंड हर शो में एक पैटर्न आपने देखा होगा, जजेस के लफड़े। कोच इसके नहीं हो, इसका एक माइंडसेट होगा। एक सेकंड क्या माइंडसेट? आई एम ब्रेकिंग अ कॉन्फिडेंस और शी इज मेकिंग मी फील दैट आई एम नॉट प्रेजेंट। ये काम पे लगे हुए हैं। दिस इज नॉट सीरियस। आसिम भाई का सही है भाई, कंटेस्टेंट थे तो भी सेम एटीट्यूड, जज बन के भी सेम एटीट्यूड। जिसने रोहित शेट्टी के शो को नहीं छोड़ा वो रुबीना को क्या ही छोड़ेगा। इंटरव्यूज में बोला कि मैं अपने आप को अपने प्रॉब्लम क्या है तेरी? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, आई एम वेरी सॉरी। कल भी तूने बहुत बकवास की। बस सर आपके सुन एक मिनट मेरी बात सुन ले वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। ऐसे मेरे से बदतमीजी नहीं करना उधर। आई ट्रूली बिलीव आसिम भाई खतरों के खिलाड़ी का टाइटल डिजर्व करते थे, बिकॉज जिस तरह से ये अपने करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं, असली खतरों के खिलाड़ी भाई यही है। जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है। आई अर्न ट्रिपल ऑफ इट। आई हैव सो मच मनी यू कांट इवन इमेजिन। ऑफ कोर्स बहुत पैसे, क्योंकि पैसे के लिए तो कोई गिर ही नहीं सकता, इतना पैसे तो होंगे ही। मैंने नोटिस किया आसिम भाई कंटेस्टेंट की तरह एंट्री तो मारते, लेकिन शादी में रूठी हुई बुआ रहती है ना, वैसे कल्टी भी ले लेते। Do you think we're fools? No, we're not. Then I don't think you're a fool. How can you say when we both are saying that she's bad? Yeah. How can you say कि मैं उसको एक चांस देना चाहता हूँ? इनको नजरअंदाज कर दो, इनको नजरअंदाज कर दो। How can you say आपके 2 मास्टर को नजरअंदाज आपका डी सुजा था। तो
what happened? It was my opinion, Remo, that I think that उसके बाद रेमो सर भड़कने की जो एक्टिंग करते वैसे जैसे उस लड़की ने डांस किया था। आर्ग्यूमेंट देखो ना कितना फॉर्मल है, ऐसा नहीं लग रहा है दो सीनियर एचआरस लड़ रहे हैं। टीम इस कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी? सर मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं ना वो आपको नपुंसक समझते हैं सर, बस यही इमेज हमें मार्केट से हटानी है। और ये गीता माँ एचआर इंटर्न है इसमें। आपने खराब किया, आप क्या समझते हो हम अंधे हैं? शोज का मेन पैटर्न नहीं होता, इतना लंबा जजेस का आर्ग्यूमेंट नहीं होता जितना लंबा परफॉर्मेंसेस होते हैं। लेकिन ये रियलिटी शोज यहाँ नहीं रुकते, पहले तो ये इतना हाई इंटेंसिटी वाला झगड़ा दिखा देंगे। फिर बोल देगा आपके साथ तो प्रैंक हुआ है। वो बेचारे पुनीत को ABCD 2 में भी बोलने नहीं दिया था और अभी भी प्रैंक कर दिया। शो तो डांस का है लेकिन नाच यहाँ पर सिर्फ क्रिंज का होता है, नंगा नाच। टैलेंट तो यहाँ पर टेस्ट होता ही है, साथ ही साथ ऑडियंस का पेशेंस लेवल भी। क्या हमारे अगले कंटेस्टेंट लकी मल्होत्रा भी यही करने आए हैं? ये आपने जो हरकत की है अभी स्टेज पे, ये क्या था? मैं इसलिए कह रहा हूँ आप परफॉर्मेंस देखो तो सही। बीच में परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस जैसी भी है, प्रिपेयर करके लाया है। डांस तो डांस है ना, ये डांस है, फिलहाल ये डांस है। आप जा सकते। नहीं जा तो मैं सकता हूँ। वो आप जाओगे भी? क्यों जाऊंगा? इससे पहले कि मैं वहाँ पे आके वहाँ पर आके क्या आपको बताऊं कि डांस एक्चुअली होता कैसे। ऐसा मैडम कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जितना मुझे आता था मैंने कर दिया। मेरी बात सुनो, जितना आपको आता है आप जज कर रहे हो। एक तमीज होती है, आप में तमीज है? ये पहला बंदा है जिसने गीता माँ की आँख की है। भाई का नाम तो लकी है, टैलेंट के मामले में थोड़े अनलकी है, बट आई एम विद दिस गाय। यही स्टेप्स अगर अजय देवगन करते तो लोग उसे वायरल बोलते। भाई अजय देवगन ने तो सिर्फ ये किया था, ये तो पूरा स्टेज पे लेट गया फिर भी बेइज्जती। एक मारे वो मिस्टर काले से बैठे हैं कोई, वो कह रहे थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। लेकिन इसमें रेमो सर को तोड़ने की क्या जरूरत थी? ये ऐसे लोगों की वजह से रेमो सर अपनी मूवीज में खुद एक्टिंग नहीं करते, प्रभुदेवा को भेज देते। मैं पीछे खड़ी थी, मेरे पहले 3 लोग FM से आए और उन्हें मेरे पहले आने दिया गया, उनका सिलेक्शन भी हो गया और दे हैव गॉन। व्हाट दिस? मैं इतने सुबह से वेट कर रही हूँ। आपको पता है कि क्या हुआ? बकवास कर रहे हो आपको? यस मैम, आई सॉ। दीदी तुमको क्या लग रहा है इधर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रहा है क्या? है इधर राशन की दुकान पे फ्री चावल मिल रहा है क्या? थैंक यू सो मच ऑल द जजेस। मुझे जो कहना था मैंने किसी को पहचाना के इधर में दैट टाइम आई सेड कि मुझे तो बोलना था बोल दिया, बोल के गाली दे दी। सुनील पाल और इसमें पता है क्या फर्क है? सुनील पाल को बेइज्जती के लिए पैसे मिलते। नमूनों की बात चल ही रही है तो इसको देख लो। आपके गले पे क्या लिखा है? मेरे गले पे लिखा है सेटन। मेन इविल की जो मेरी डेफिनेशन है उसको उल्टे करके देखिए। मैं जिंदगी जीता हूँ और मौत का मुझे डर नहीं। नहीं मुझे इसकी बात से प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जो बैकग्राउंड में ऑडियंस ने जो तालियां और सीटियां मारी है उसका क्या? और मैं ये सेटन वाले लोग को कुछ बोलूंगा नहीं भाई, बोलते तो फिर विवाद हो जाता है। सेट तेरे जैसा यार का भाई गाना सुन के तो प्रूव हो गया कि सेटन का फैन है। सेटन नरक में यही गाना बजाता होगा टॉर्चर करने के लिए। वो किरण खेर भी पहली बार पल्लू से मुंह छुपाने की बजाय वो पल्लू से गला घोट देगी। यही डाल देना ना अगर हो सकता है तो। नहीं मुझे जानना ही नहीं मेटल म्यूजिक कैसा होता है। अब कुछ इंटेलेक्चुअल आएंगे बोलेंगे भाई मेटल म्यूजिक, मेरे को नहीं जानना मेटल म्यूजिक कैसा होता है। हम किशोर कुमार सुन के बड़े हुए, हम अरिजीत सिंह सुन के बड़े हुए। हमने तो लास्ट टाइम मेटल सुना था तब जब लॉकडाउन में थाली बजी थी, उसके अलावा हमको मेटल सुनना ही नहीं है। क्या रेट है जी? 200 रुपए। एक गोले का 200 रुपए जी। क्यों जी इसका जो वाटर है, कोल्ड ड्रिंक वाटर, वो मैं यूनिक तरीके से तैयार करता हूँ इसलिए। क्या पानी को यूनिक तरीके से तैयार करते हैं? या ऐसे फूड रिव्यूज देखने के लिए ना मेरे सेकंड चैनल पे जाओ। क्या बात है। Of course it would, so I Full would say चूतिया go to it, बात why है। the hell not, but I would not recommend it to them because it can really hinder their opportunities to make in the top 15. Though I am seeing Wolves committing once again the farm drop they've been dropping there for a very long time now. Full चूतिया बात। I am seeing a red team just behind Wolves. I feel like Nigel might be able to western stretch it, avoiding Wolves slightly. So that should be hopefully resolved. And then Will sending it back into Nova. I'm not seeing Go teams, so they might have a chill this day. ओए भाई क्या जोन बना है। Might just be going onto a military. Let's go भाइयों, island लाइक finish. कर दो। Southern Circle coming out here, just a very big threat for a lot of these teams. 10,000 likes Alpha 7 from North George. I'll tell you one thing, Max. They got to get moving a lot faster than the last time we saw them play a military. थर्ड मैच ही नहीं है?
Yeah, we'll see. Oh, damn it. That's okay. Sorry, just to go on this again. Oh my this goodness. is Weibo this time. Oh, it's not the Nongshim Red Force are nearby, but okay, Weibo get it. Can you ask me a question again? Sorry, I was confused with this now. I was like, what's going on? It just shut down my brain like, oh no, hot You're drop right. time. No, it's so true. Yeah, I mean, Wolves losing a player again, it's just, it's looking pretty much over at this point. I was saying that when it comes to Alpha 7, they need to get looted and moving a lot faster than the last time we saw them in military. You remember that? Because they got stuck out in the blue zone and they took their sweet Tagesh time has and improved got his punished for it. video, There were but so many teams very slow. They're not the only team. I think अच्छा वीडियो है भाई RQ and D Plus was very slow on the pivot. Fun There was video. another team, I think it was LGD. मजा आता है ऐसे मेरे को Look at देखने LGD. कभी-कभी. Hey, they're already on the island, right? They're dropping here. They're looting up military base, so they're going to be loving it this game. So I'm very excited. And again, this team has been just doing so much good work. 69 points here. Nice tied up with the likes of S2G. Though it's a bit of a chase here. The race is real to make over the bridge. Federal, though, tanking the bullet, surviving with almost just 1 HP. And the clapback of Solis is huge. Gets the headshot with the AKM right onto 33Z. Screen? And Weibo, Oops. they just can't Victor. stop. They got to keep driving forward. And Abhi, Coops kaun is gaya? on the other side. Finding the angles, applying the pressure. Weibo getting destroyed. It's all up to Sook by his lonesome Coops. Is he gonna wait? Take his time? Get these? Nope. Gonna get these confirmations immediately. He's going for it. Oh, gets taken out. Where's the team? Where is the team? Coops eliminated. What's going on? What? I am. This is just so random. The Weibo would send it without any kind of scouting. Really good shot from Ado. They're trying to get it from below the steel beams. I think you can hit one more pellet, and it's going to be game over for Weibo. It's going to be almost a non-game, and that's a good back shot. Ado locking it in. They do lose Coops though, but at least they do get 3 early points. You know what? Losing one player, you get 3 points. It's not the worst situation in the world. Though over on the other side of the bridge, it's Ulf versus Influence Rage. Again, this crossing, the fact it's on phase 1-2 when still the northern side of the circle is on the mainland, there's no rush, and yet they sent it so quickly. Yeah, I'm very uncertain as to why they were so rushed to make that play happen. Yeah, speaking of rush, man, honestly, I really did not like that. I mean, in my opinion, there was no need to rush that and try to go in solo. Why risk the 1v1? Just wait for your team and do that. So, I mean, yeah, you're right. I mean, to get those eliminations and lose players fight worse, बहुत फटफट हो रहा है ना इसमें. It grinds my gears, Max, when it's an unnecessary loss, especially for a player like Coops. Yeah, like I would do plays like that in, you know, Ultimate Royale. Yeah, why not? Just say, I got this. Yeah, in Esports I might like slow down, like let me just check where teams are located, and maybe it'll work out for you to see that no one's going to be looking to set up that defense. Though Tian, one of the top MVPs so far this entire event, and it's just going to be a little bit too much to bear. Taken on down, lost, gets the headshot with the S12K, and now looking to lock down the solo player here in Wei Ji, and with the yeah, there he does it with the QBZ, locks in the extra elimination. S2G up to 3 limbs, and that sole survivor in Mao Mao of LGD is just going to go for that quick pivot away. But actually, I kind of want to, as we have all of these early fights are kind of wrapping up, Federal does gets locked out. Top clashes इसलिए I saw a very interesting fight question earlier in the chat. last time was exactly, I top want to bring it up to you, and we can talk about it. Because all gamers already qualified straight into the grand finals as they won their last PL tournament. Do you feel like that gives them a bit of a Top disadvantage? dog की team ने आज ही matches नहीं है against these teams in the group stage? I think it definitely puts them a little bit behind. हाँ यार, order कौन सी team में but, I mean, just the fact that they're hitting the finals off the rip, that also doesn't give other teams the opportunity to see what they can do, you know? So we know they have the skills, they have the experience for sure. I just think the fact that all these teams are not going to know kind of any idea where they're dropping or have anything to study on actually gives all gamers an advantage, but we'll see. Okay. I would say it's definitely would be good to get some experience. But you know what? We got an interesting fight here happening on Fairy Place. This because finals one thing that was very interesting, how Alpha 7 put that hovercraft
in front of the open door of that warehouse, and he just allowed the entire team to exit from the water straight into the building. That was a good play from Alpha 7. I'm going to even go on a limb and say here, that was the first good play I've seen from Alpha 7 this tournament so far. सुबह 9:30 कुछ निकला था shoot के Well, लिए. they'll take that. That's for sure. I mean, they need a lot more, though. I do like the fact that they got moving a lot faster, right? This is stage 1. They're already right there on the bridge. They're holding a position in this circle. The zone could shift north. Most likely going to go down to Sosnovka, though. कुछ वो चल रहा है. As you can see, Young Galactico setting up a bit of a bridge camp here. Oh, catch in the wall. Oh, yeah, catch is gone. Like, long gone. Yeah, I'm sorry, man. You're going to bleed out. Bye-bye. Oh, no, okay. Oh, there you go. Wait, no, he's there out. you go. No, that's it. He's out now. Now he's going to bleed out, and he instantly confirms himself because he knows there's no way in hell he's surviving that encounter. Top 15 into getting grand prize caught completely overall. with their pants down to, I believe, just Aaron now. अच्छा इसमें top 15. So it's not the start WBD they were तो hoping for. 28 चल रही है Actually, no, भाई. there's two players. It's Aaron and Yeah, also STD, an extra LDD player. तो Oh, कर no, he's far to the western edge of Ferry Pit itself, so he's just nowhere near his teammate. So, interesting early fight. I would say, sure, it wasn't a hot drop, but I'm still not a fan of these no scouting quick rotates because it really just, you're putting up to chance as to is your rotation going to be successful or is it going to fail, like we saw with the side of Weibo. Though Chamba might be something similar. If they don't scout, we do know Young Galacticos on the other side of that bridge. That could be a risky bridge crossing if they don't look ahead. BGMI Yeah, they got to be very, very careful here. I mean, every team should know that the bridge is taken, right? You got to leapfrog it very, very carefully or take a boat. That's going to be the safest way to get to that next circle, and GOAT are doing exactly that. Let's see where the zone's going to go, though. Are we going to see some crazy shenanigans? Pachinki shift? That would be wild. Rauf, I'll tell you that because they are still way far behind in this circle. But the zone is gonna go towards the bridge. Okay, so Ferry Pier still in play. I wonder what Alpha 7 is thinking in the circle. Maybe they just hold that position while the teams on military base are gonna have to slowly creep on back towards that bridge. Enigma Galaxy, very, very set up in this one. They're gonna have to fight things off though as a 3-man. This is almost the same circle we saw yesterday on a military, but instead of being on the eastern side, it's on the western side. It still has a bit of mainland in place. It's still no possible to have a mainland finish. The car just spinning out of control. KSG, gotta be cautious here. Hopefully, a bit of backup could get him out of that really tricky situation. As Alpha 7, we did see in the elimination they're trying to get for a swift exit. Good headshot connecting from Schweppes. He's down to 1 bullet. Has to go for the reload. That's going to get He's already a bit more just chill time for A7. But actually, wait a minute. Why is Alpha 7 here? They were in Ferry Pit earlier. I swear, I'm not crazy. Right. They were in Ferry Pit. You're right. Why are they on the west coast? What is this rotation? Were they trying to get cars? I'm drawing a blank. Yeah, maybe trying to find a vehicle. Look for a boat, perhaps. They had a 14 in Ferry Pit. This is the biggest question. I would love to talk to them. Why are they here? What is going on? Why are you here? Oh my goodness, it's on fire. They wanted to stop for the vehicle. They can't. Oh no. Oh no. One more bullet. Oh, it's going to explode. Yeah, got to leave. They did have another vehicle that is lucky for Guizao and Carrillo. But I say that, the luck runs dry. Carrillo, the IGL is dropped once again. They have to run. What is this rotation? What is this early play from Alpha 7? I have never seen something like this when you have a good position in the circle and you're like, haven't been in the blue zone long enough. Let's go right out in the blue zone. What was that? Alpha 7 इतना lost. I'm at a loss for words here, guys. I'm at a loss for words. I do not know what is going on with Alpha 7 here. I've just never seen, I mean, it's so crazy because in the past, we would usually see them get like so fortunate. Like they would be in a fight and be 3 down and all of a sudden another team with third party of the team fighting them and everything works out. And now it's just seeming the opposite where it's like Murphy's Law. Everything that can go wrong will go wrong, but they're also making decisions that's like, what are you doing? Alpha 7, why? You know what? Why? I summon the man himself, your #1 analysis YouTuber, Truce, from India. I need Truce to come in here and make a short video
of what Alpha 7 were trying to do because I have no idea. I cannot even begin to imagine. कौन है my India से? theory is Truce? they try to get some vehicles or maybe some extra loot, and I don't know why, because Revo was here. They were a full team in this exact location, like, what, 5 minutes ago? And they're just like, oh, Revo, stay here. We'll send 3 players to the west. They go right into E Arena. Truce, we need you. Didn't they have a hovercraft? Did they lose it? They did. I feel like it might have gotten damaged a little bit, but even then, it's still a valuable vehicle to have because you can cross the water with it. By the way, circle shift, it goes back to the mainland. Wow. This is one of the weirdest games I've seen so far in 2026. What is going on? It's just question mark game for me. I mean, after that Alpha 7 play, I said, I was like, maybe they're going for a boat, but if they had a hovercraft, that doesn't make sense. Nothing makes sense at this point. Up is down, left is right. Master Smile trying to make a left, goes out of this one with Tianba holding the bridge. And this is on the other side of the map. This is the eastern bridge in blue zone. So teams, like 4 or 5 squads are trying to go down that other bridge, and Tianba are holding it down. I wish Yangon waited a little bit more just to let Tianba go for the exit. Now they just showed their location away to Tianba, so they're going to try and hold it down. They got the elimination. It's down to 1 player. So Yangon, this is just going to be a straight up non-game for them because he's, as you can see, he's 1,000 meters away from the playable area. So he's got to be very silent for now. Let the teams go for a quick exit, like your S2Gs, like your Goats, like your Tiambas, and maybe you can do something on the beach side or go in the water and survive, get a few placement Parabol is not performing. Parabol also team Otherwise, Yangon might be slipping out of the top 15, which is where you want to be if you want to reach those finals. The Goat team clashing straight up head-to-head with the likes of S2G, and S2G taking a massive W and giving that L straight back to the EECA team. This is just wild. JDG. I feel like we're seeing too many smart players here. You know what I'm saying? Like everybody's trying to do the super smart play, and they're getting punished for it. They're all like, "Oh, you know what? Why don't we 5 squads? You know what? Let's go down the eastern bridge. No one's qualified है भाई. Qualified है. S2G. Yeah, it's just very. I understand this circle is a very odd one. So teams maybe are getting very desperate, like, oh, we have to do a quick. बारिश गिर रहा है क्या? Shut up! Look at it. क्या मौसम हो रखा है? क्या बताऊँ आपको? But yeah, it's very desperate times for teams. And actually, you know what? Sorry, I'm bringing the conversation back to Alpha 7. If they stayed where they were, they would be almost center circle with a full team. Just straight up set up. Just set up. This could be their ticket to the finals if they didn't go for that weird send. You know, can you message one player of Alpha 7 after this show, please, and ask them why they did that? Can you? Thank you. I need to know. I need answers now. Oh well. That is just absurd. I mean, it's wild. It's wild to think about. It's wild to see. To be honest, but you know what? We're still in this game. Let's see where this next zone is going to go. यहाँ थी. I know that we keep harping on it, guys. But it's just we have not seen that before. Like, it's something brand new. ऐसे तो नहीं करेंगे. It is. D+ playing on you know what else is not? You know what's not new? RRQ getting blessed, baby. Let's go. They are set up in this one. Let's see if they can make RRQ Thailand की टीम नहीं थी. ये इंडोनेशिया की कब हो गई? Tiamba's heading right towards him. Don't fight Tiamba. Just give it up. Go on to Lepar. He's already on the crossroads section. Unless they want to play edge, if they're more of an edge-centric team, that's completely fine to focus on that. But this is a fight that if I could recommend would be good to avoid. The Ney coming in. Oh, good move from Genfoss. He remains there a little bit longer. He might have gone knocked or taken a significant amount of damage from that nade of Tiamba's side. So they will go back into hiding into G7 Thailand small compound straight up north of Longwood. But good push up. Tiamba instantly demanding respect. This is our mountaintop. No one's going to rival us here. We're going to zone teams away instantly the moment we pull off that rotation. I like how present Tiamba are in terms of aggression. If they push somewhere, you know it because they're instantly going on the aggression side of things. And QZZZ, with so many Zs, is he going to get a 4th one tomorrow? Maybe. But he is going to find a nice knock onto Wolves. So NA really struggling here in these games. Yeah, अलग RRQ RU है. Okay. Alpha 7, they're done, in my opinion. Actually, वो Thailand की team. I'm calling it here now. I agree. After this game right here, Tiamba in pretty much the best position in the circle, at least in my opinion. Loot truck! Gunman said, "I want it. I need it. Give it to me." I thought he got looted earlier, so that's why I was like, oh, okay, it's probably not going to be on the bridge, but no, they're going to explode it. That's going to offer a little bit more cover, but it's still not in the play zone. Smoke it up. I would not, you know what? I think this is a bad idea. You know where players are going to try and loot up that loot truck. Nigma Galaxy are just going to look your way, maybe even Influence Rage.
It's a super risky loot truck to go अरे for. They क्यों will वेल्डर्स द trample it off. मर्डरर And पावर Say Cloud 88 just सारी sneaking his way मोबिलिटी behind. He sees the की smokes. He knows yes. something's fishy here on the That's what- bridge. We'll be looking to get a quick backstab That's onto what the need. South Korean team. Will he get that silent. knock? Yeah. Don't give away your position just yet. This is stage 4, though. He's going to have to start taking some shots soon. Otherwise, he's going to be eliminated. That's what I'm to the saying, blue. Niggy. Oh, it looks like he might just be following the Boot leader camp में here हो on the क्या? bridge, घर पे हो रहे as a matter बाबा. of fact. They're not looking backwards at all. I सोया think नहीं this यार is कल all से ढंग clear से. for now. Luckily आज भी enough, बहुत they didn't नींद आ get रही थी shot but at by Infant's Rage. I was Stream scared था. that loot truck would be, you know, the loot is just too much. They try to go for the precious for the Rings of Mordor, and it could have caused their demise. But no. They were able to do it. Good smokes. They do see Scarface from Ulf, though. They really lost 2 players very early on in this game, but they were able to regroup. But that smoke, that's smoke instantly... action. Yeah, they're going to spot it. And that's bad because Ado is in nade range. If he sees that smoke, he's instantly might try and peek out of the water and get that nade elimination onto Scarface. I think he's going to just stay in for a swim at this point. He's going for क्या placement. Saying, I'm going to play on the edge. I don't want to give him no attention. Say Cloud, though, says time to make some moves. I'm in the blue. I'm not making it out of here. I got 4 meds. Let's see if I can get at least a couple of points for my team. Gets 1. That's and it. it's Hyunbin, too. It's always tough, man, because you just never know on these circles who's behind you, how long have they been out in the blue zone. He's got 3 first aids, 2 bandages. He's got no stim, so literally this is going to be the last few seconds of him that he can actually tank that blue zone. He's going to get more possible meds here on that crate of Nongshim Red Force. So he's going to be ये legit Alpha 7 का match था भाई. That could be a very ये match में Alpha 7 qualify elimination. होती finals के लिए. He just doesn't have the exact position in mind. And actually, the Lighthouse is still in play zone, if I'm not mistaken. So, Inference Rage, their gatekeeping opportunity is through the bloody roof. As Say Cloud sends it forward and gets picked off Tizzy to secure their first elimination of the game. Probably one of the worst feelings as an esports player when you're just trying to get in a zone. You think that there's no chance someone's behind you. You just get beamed right in your back. Legit You know, you're just like, why are you there? Why are you there? And yeah, it's unfortunate for Hyunbin, but Tizzy does get the revenge for his teammate. Only 1 elimination so far, and that's Jinx on that singular player. Meanwhile, yeah, look at him just swimming it out at this point. It's just going to keep When in doubt, swim it out. Yeah, swim it out like in Nemo. He's trying to get a surprise drop maybe onto Nongshim Red Force. There's still a bit of water in the circle over to the eastern side next to Influence Rage. So realistically, if you are Ado, and I think that's exactly what he's doing, just go for the wide eastern swim rotation. What do we call it? The swimtation. Patented, yes. We'll see if he can actually just get a few placement points. If he gets top 8, that alone would be a small win for Nigma Galaxy for Ado, as he can actually somewhat redeem this game in the eyes of PMMI 2026, as D+ finally looking to leave the side of these yellows compounds. And the gas station is occupied. Got solo Elementrix from Wolves. Got Chiamba in the warehouse. If they get spotted Elementrix earlier and they know it's a solo here, Hotjuice, that should be an instant push coming out from D+ on that exact location. Absolutely. Calm before the storm here. Oh, it's Ado. Yeah, in trouble. So easy. Making it look easy here on this bridge, but it is going to get difficult very, very quickly here once this zone pops. This is stage 5. Blue zone is going to start chunking you. Tianba, RRQ. Looking good. Little boy. M16 single tapping there. M16? S12K loadout. That is, I guess Influence Rage are very undiluted if they've been here for a major portion of this game, because that loot is just not it. As Tizzy trying one of the most insane nades. Yeah, I've tried those before. You just can't reach that ridge line, so Tizzy is fine. I think he's just making sure they don't peek over the ridge aggressively and forces them backwards a little bit. But he tried, and unfortunately, it didn't work out. Try to pull off an Uncle Rico right there. How much you want यहाँ से वहाँ आएगा क्या? And it did not work out. But yeah, I mean, definitely a little warning to, hey, leave us alone. As Nongshim Red Force are going to go for a little swim here, trying to find the off-meta play. Hopefully find a way up this mountainside. They're going to have to put on their remember box shoes, team and Torina Power. Yes, 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 so sir, yes, sir. For now, D+ Kia starting to make some rotations as well. And right now, everybody else is just big chilling at this point. Yeah, D+ Kia are in a great spot.
Tianba rock solid. Oh, Nobu getting knocked though. That's by Elementrix. Elementrix making some noise here. Not able to secure the elimination though. I was going to say this is actually not a good position for D+, because Tiamba's location has a direct line of sight behind this rock. The only way you can play this rock is if the warehouse is not in play, which it is still going into circle number 6. So I think that D+ here, losing that vehicle, this game is just not going to work out unless they maybe have an extra wheel. They looted somewhere and they can repair the vehicle here for the Roadster. But otherwise, the moment that smokes dissipate, I feel like maybe they don't get eliminated, Hodrix, but at least they do lose their way of transitioning deeper into this game. As RQ, though, sending it straight onto the Thai team. It's going to be onto E-Arena, La Par. Okay, well, that breach is looking interesting, but the 3 players get knocked pretty much in the first 3 seconds of that breach. Not what they were expecting. Yeah, 3-1 push is just shut down instantaneously there. Good job from E-Arena. Ralph peeks out of the shack. He's right back into it. Team Galaxy with a single player. Still 9 teams remaining, guys. It's 22 minutes in. If you go out now, you're getting 0 placement points. Nice shot there from Genfos. Rapid fire mini. Yeah, gotta try and redeem it when you've got no teammates remaining. And he's going to try and encroach slowly. I would recommend maybe a wide eastern rotate, try and send in the water and get some placement points. Because here, the only way you get into the circle outside of going in the water is by fighting someone. Ralph could be a good option, but he's not even in the play zone himself. That shed is not going to be in circle 6. So Genforce just kind of weighing his options. What the hell am I going to do? So he's trying to make it over to that other shed, which is in the play zone. He doesn't know it's free, and he's just going to keep sending it. He loses the wheels. He goes out, and that is it. Game over. RRQ not getting a single placement point in game number 3. Wow, interesting play. You know, sometimes you see a shack right there, but you also see a wide open street in zone 6, and then a wide open street sometimes is the play, Max. That time it wasn't, though. That was not it. Every other time it's not either. But you know what? You never know unless you try. And let's go pay off at all. Noble, though, sending it in the water. I know he's got some great movement tech, but in the water, it's got to become Michael Phelps if he wants to get something of value done. And yeah, the big issue is that Tiamba had that direct line of sight. All the vehicles have been just completely wrecked to pieces. So that rotation is not working out. So it's just a salvage game at this point for D+. If they reach top 5, I would say that's a quote-unquote win for the South Korean team. Outside of that, chicken dinner, almost impossible. Yeah. Sorry, that was so funny to me. Nobu just... great movement, but only on land. In water, I mean, actually, you know what? Update 4.5, you got a dash in water. Noble, if he has the dash in water of update 4.5, maybe he can clutch it up. Who knows? Perhaps. Let's see here. Ralph, though, is trying to clutching it up here. Ain't gonna happen. That shack is gone, brother. In the lay down, and that is it for him. So Nick Galaxy out of this one. EA Irita, man, are starting to step up that aggression. Looking so strong here, Max. Look at that. 28 points, guys. They have passed up Alpha 7, and they have only played now. This is their 3rd match. And it's not finished. Unreal. And it's not done yet. It's not done yet. They could make it a 30-point day so far in only 3 games. That would mean a 10-point average every single game. They are looking super happy. Though the Monster Truck rotation is going to be happening, unfolding in real time for Tiamba, sending it straight onto that solo player. It's Elementrix of Wolves trying to redeem it somewhat. We're not going to see that POV fight, but Elementrix does get dropped and taken on out. Wolves, not the game they were hoping for. They do get 1 placement point for their troubles, and they will remain in 12th position. But keep in mind, they are from Group Red, meaning tomorrow they're going to keep on slipping down the ranking. So will it be enough to reach the finals? We'll have to wait and see tomorrow. XEY dropped on down. He's got the MG3, but doesn't have the time to shoot a single bullet. Nongshim Red Force getting overwhelmed down to now so easy and tizzy. What can Noble do? Because guess what? He's back on land. And he's ready to put in that work. He's like, oh, my socks are dry. I'm ready to make some things happen here with them shimmies. E-Arena, wow, look at the smokes all over the place. Making sure that rotation is safe. They do end up getting to this Wizard Tower, and it's clear. So, wow, E-Arena, great steps of Mormon actually pushing up here. They have to know this is taken. Yeah, Ulf are here. The pins are getting pulled. Scarface, shotgun ready. That door opens. Whoever's there is going to be in big trouble.
It's Scarface and Eren. And if you guys remember PMGO Season 1, we saw what Eren could do against a full squad of BTR. The second Molotov, just to confirm it. And that is it. Norman will get the drop onto Scarface. Oh, Eren with those 2 nades, trying to maybe allow his teammate to make it forward, but nope, Scarface. Eren, actually, that's a double nade confirmed from Mormon. After an amazing breach and great timing and execution, they do confirm the Western compound. And off that position, looking at the circle, Hodrix, that could be converted into an actual E-Arena chicken dinner if they play their cards right. Dude, E-Arena are going crazy, guys. I mean, they've already averaged 10 points a game here in 3 matches. Joker just get knocked down. Oh, it's in! Right into the bite force of Tizzy. I don't even know what to say here because he just dropped right down into that one. Meanwhile, we can see Tizzy not going to really be able to get a chance at another elimination, but he'll just take all those drop downs he can. Just try and survive, just get some placement points. If you get top 4, that would also be a nice one. Nolbu just dropping on down, and he's going to be in the blue very soon, so got to be careful. Why are you doing this? What? Okay, sorry, I didn't know how to respond to that. Why you just yeeted himself over the cliff? What is happening? What is happening in What is this game? I can't be seriously making it down. Oh, क्या हो रहा है भाई? Random Rage shit. outside of the circle, no vehicles. They are toast at this point. No way! Taking out the eagle. Oh, is that a steal? It was. Look at that. 30K E-Arena taking every point away from everyone. Great game for Tiamba, though. Tiamba, one of those teams that we needed to see something from, and Nolbu is down. 10 eliminations on the side of Tiamba. A phenomenal game right when they needed it. They could have won that game, but now losing 2 players, one because he yeeted himself over the cliff and the other one for the hands of Nolbu. I feel like they just completely lost control of this game. Second place might not even be available because look, they're getting peppered by the entire force of Thailand. It's the Arena going for the win here. Influence Rage do get swept under the rug, and that's it. It's only them and 2 players of South Korea from Nongcham Red Force. It's so easy, and Tizzy in the water, so the only real threat is so easy. Can he get the 1v4? So easy. Playing it so carefully. They have no idea. No idea. When is he going to take the shot? Oh, he peeked back! Oh, this dissolve! So easy! Not able to get the knock. Gives away his position. Gotta leave. Brutal play from him. You're in a very nadeable position. He does take a lot of damage. It's a bit beating, getting pushed up, and that shotgun will lock it down. E-Arena. हाँ भाई वो दे सकता था, 1 नॉक दे सकता था, 2 नॉक अगर बहुत अच्छा मारता तो 2 नॉक दे सकता था. आगा. चैट. तो इसी के साथ हम अपनी आज की स्ट्रीम एंड करते, और जो भी आरपी बॉयज है, ठीक है, आज रात को आरपी अपन करेंगे, तो आप लोग सारे आ जाना, ठीक है, क्योंकि आरपी होने वाली है रात के 8 बजे 8:30 बजे. देखते हैं कि 8:30 9 बजे जितने भी है करूंगा, और रात तक करूंगा. तो किक पे करूंगा, तो आ जाना किक पे. GTA आरपी देखने बहुत फन होता है. 8:39 तक आऊंगा किक पे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. किक पे आके मेरे को आप फॉलो करके रख दो. और कल सेम टाइम पे अपन आएंगे. अब ये और आई गेस कल लास्ट डे, और उसके बाद 3 दिन का फाइनल से अपन पूरी वॉच पार्टी करेंगे इसकी. तो अगर आप लोग न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो लाइक करना. आज के लिए इतना ही. चलो गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बॉयज. अच्छे से रात को मिलते किक पे. बाय बाय.